गुड मॉर्निंग डॉक्टर एम पटेल सर. ગુડ મોર્નિંગ. કેવું છે? બસ સર મજામાં છીએ. તબિયત સારી છે. તબિયત સારી હોય એ જોવો ને. ડોક્ટર એમ પટેલ સર ઇઝ અવર ડાયરેક્ટર સર. Honorary director. Okay, madam, you can carry on. Continue. Okay, fine, sir. A very good morning to all of you. I, Swati Khare, Assistant Professor of Pharmaceutics at Sri Swaminarayan Sanskar Pharmacy College, Zundar, and the coordinator of today's e-seminar on awareness on narcotic drug and psychotropic substance, cordially welcome all of you. This national seminar is sponsored by Gujarat Council of Science and Technology Gujcost and Department of Science and Technology DST and is organized by SSPC Zundal. A total of 770 participants, including faculties and students from pharmacy department across the India, have registered for this seminar. It's a mark of our underlying tradition to evoke the MIT at the beginning of an important event. As a great philosopher has once said, the function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of ones who prays. So now we are going to start a prayer. Before the launch, let me first acknowledge the presence of some of our eminent guests. I considered it a great honor to welcome today's chief guest, Shri Shailendra Kumar Mishra sir, the Zonal Director of Narcotics Control Bureau, NCB, Ahmedabad. Good morning, sir. I would like to welcome today's of e-seminar, Shri Amit Kumar Khare sir, Intelligence Officer, NCB, Ahmedabad. Now I welcome Dr. M. Patel sir, Provost Sabarmati University, former Vice Chancellor of Hemchandracharya North Gujarat University, Patan, and Honorary Director SSPC Zundal. Now I would like to introduce Dr. Kunal N. Patel sir, in charge principal of SSPC Zundal. He has completed his B Pharma from KB Institute of Pharmaceutical Education and Research Center, Gandhinagar, and Pharma from AR College Pharmacy, Vallabh Vidyanagar, and PhD from Nirma Institute of Pharmacy. Sir has more than 12 years of experience and he had published more than 50 articles in various national and international journals. Sir has organized various seminars, webinars, and refresher courses. Now I request Sir to give a brief introduction about our college. Over to you, Sir. Kunal, Sir. Yes, madam. Thank you, Swati madam, for giving kind introduction. Good morning to all. Respected chief guest of today's event, Sri Shailendra Kumar Mishra sir, Honorable
Sri Amit Kumar Khare sir, Honorable Dr. M. Patel sir, our Param Pujya PC Sastri Swamiji, event coordinator, co-coordinators, all the faculty members and students who are joined here. Good morning to all of you. I heartily welcome you all in the National E-Seminar on Awareness on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, sponsored by Gujarat Council on Science and Technology and Department of Science and Technology. I will give the brief introduction of our college. Sri Swaminarayan Sanskar Pharmacy College is established in 2005 under Sri Swaminarayan Sanskar Deep Trust, which was established in 1977 by Kothari Sri Nanji Bhagat and Sri P.C. Sastri Swamiji. B.Pharm course was introduced with 60 seats in 2005, and after that it is increased up to 100 seats in 2012. M.Pharm courses in pharmaceutics and pharmaceutical quality assurance was started in 2010-11. Our college is approved by AICTE and PCI and affiliated to Gujarat Technological University. We have qualified and experienced faculty members, based infrastructures, theater type classroom with LED projectors, well equipped laboratories, library with more than 10,000 books, MOU with pharma industry, placement cell, healthy environment for education, and many more. We are organized number of seminars, conferences, webinars, refresher course for the registered pharmacist, guest lectures, industrial visit for the faculty members and the students, extracurricular, co-curricular activities, hospital training also, and social activities like blood donation camp and polio awareness camp was organized in our institute. In the year 2020, we have successfully organized 7 to 8 webinars and also celebrated World Pharmacist Day and International Women's Day in 2021. From our institute, 6 faculties have completed their PhD, and right now 6 faculties members have pursued PhD in various universities. Recently, one faculty member has received grant under SSIP also. In a span of 15 years of our college, more than 20 students have secured their rank in top 10 students in university results. Our institute gives scholarship and medal to the students who have secured rank in the top 10 in a university results, and also give medal and certificate to top 3 students in the institute during this medal award ceremony every year. Recently, one of our student has received gold medal in GTU convocation 2019, and recently one of the student secured 6th rank in BPharm semester 7 GTU winter 2020 examination results. Recently in 2021, GPET examination was conducted, and in that also 4 students from our institute have passed GPET examination. Also, every year more than 5 students of our institute have participated in international experience program in Laurentine University, Canada, which was organized by the GTU. Lastly, I convey my deep regards to Sri Shailendra Kumar Mishra sir for sparing their valuable time and being with us. I am also thankful to Sri Amit Kumar Khare sir for accepting our invitation and ready to aware the students for the use of narcotic and psychotropic substances. I am also thankful to our managing trustee and Dr. M. Patel sir for encouraging and supporting us to organize such kind of seminars. I am also grateful to all the participants for their overwhelming response in national seminar with more than 700 registration across the India. Thank you very much. Now over to you, Swati madam. Thank you so much, sir.
This e-seminar will begin with the basic understanding of hazards of drug abuse. Thereafter, more specific topics like NDPS Act 1985 as amended and the RCS Order 2013 will be dealt with. The audience will get knowledge about the legal aspects of the drug control strategy, the drug covered under the NDPS Act 1985, along with the precursor chemicals included in the NDPS Act and the narcotic and the control exercised upon them by Government of India. Now, I like to take an opportunity to introduce our today's chief guest, Sri Shailendra Kumar Mishra, sir, the Zonal Director of Narcotics Control Bureau, Ahmedabad Zonal Unit. Sir is a 2000 batch BSF officer who gained vast experience while serving in different parts of country and currently he is on deputation to NC. Sir possesses immense experience in training as Zonal Director of NCB Ahmedabad. He is overseeing a vast jurisdiction comprising entire state of Gujarat and UTs of Daman and Diu. During his tenure as Zonal Director of NCB Ahmedabad, NCB saw some noticeable seizures of narcotics and bursting of a significant network in interstate during trafficking. Under his guidance, NCB got a new recognition. He is one of the first recipients of Home Minister Medal for Excellence in Police Training. Now, I would like to request Sri Shailendra Kumar Mishra sir to share his inspirational view with all of us. Please, sir. Yeah. Good morning, everybody. I hope I'm audible to everyone. First of all, I would like to thanks the Swami Narayan Sanskar Pharmacy College and the Guj Coast who have organized this event, the national seminar, and to giving me an opportunity for addressing this August gathering. The best thing regarding today's this event is that that it is being organized for the pharma people. Basically, the students and the people who are involved in pharma sector are more important than anyone else, because nowadays when we go for the spread of the variety of drugs, we have found that the natural drugs that were earlier being used like charas and hashish and say ganja sort of products have generally going out of shelf, and mostly the pharma drugs that are mostly these psychotropic substances that are mostly being used by the doctors for treating the psychiatric patients are flooding the market, and due to their easy availability. And certainly this availability is bothering at this moment, because this is the place where pharma industry and pharma people come into this sector. So this awareness regarding this drug and how to manage it, and what are the pros and cons of trading and doing business, and if anyone is going to be involved in this drug business, what are the pros and cons will be known to you by today's seminar. And I hope the speakers that are lined up during the daytime and during the progression of this session will be able to throw the complete light towards the pros and cons of the problems that we are facing as a society, and the drug menace that is actually the most threatening part that is being faced by the society at this moment. Not at this moment, in fact, drug has always remained one of the most problematic part of management for crime scene, also from for crime management and everything. So the best thing is that this event is being organized for you people, the pharma sector people, and the pharma students who will be mostly dealing with all these things in their future course of commitments and future course of service. So service or whatever business you join at in the future, you will be dealing with all these things. So naturally, this is one of the better platform to educate and to make you aware regarding the issues that are pertaining to drug and the problems related to the society. When we talk about drug,
drug per se is not at all a bad term. It because being in pharma, you must know, you must be knowing, and you will be the biggest greatest advocate to talk about drugs, because drug is essential part of any healthy society. If there is no drug, there is no medication, then certainly the illness, the poor health and everything will be reflected in the society. So drug per se, I always say that drug per se is not a bad thing, because it is at some point of time, it is always a requirement of the society. Like psychiatric people, the psychiatric patients who are suffering from these diseases do need drugs, and they need medical intervention and everything. But the problematic part is the misuse, the overuse, and the abuse of drug. The most important part is the abuse. Misuse, overuse can be dealt with at some point of time, but the abuse, when you are taken control of by the drug itself, when the user cannot survive without the drug, is the worst part that the drug portrays before the society. And this is the problem that is basically being dealt by NCB. NCB is basically working towards the drug demand reduction, supply reduction, and ultimately the harm reduction. Now, what are all these things? That supply reduction is we generally target the networks that are supplying, that are manufacturing, that are sending it, that are providing these drugs to the society. That is the supply reduction side, and then there is a demand reduction. Demand reduction is like we are doing today, that we are educating the people who are dealing with it, the general society. You will be conveying this knowledge to your near and dear ones, the people for whom you care. So this is what is called part of drug demand reduction, and ultimately the harm reduction. Because once we control the supply, once we educate the society, once we educate the people who are generally considered to be the end user, then certainly there will be this harm reduction sort of thing that will be ultimately benefiting the society. So this is the general mandate of the NCB that NCB is dealing with. I am happy that a few of the speakers are from NCB itself, and they will be giving you the very deep insight about, and they are very qualified and very knowledgeable people who will be giving you very deep insight about this harmful drug, the knowledge that you must have regarding the drug. Basic I as a chief guest I would like to just request from you people that you only don't consider yourself as a part of this seminar just for the sake of education or something, but do become a flag bearer for NCB, do become a flag bearer for your nation when we talk about the harm reduction and the supply reduction and everything. Because being the student, being the educators being educated people at this moment, and you will certainly be the flag bearer of the industry at a certain point of time in the future. So if you are educated, and if you understand the menace of this drug, then certainly it will be very great achievement for the country to achieve the harm reduction and the supply reduction in each everything. Because at some point of time, the pharma industry is a major source that is supplying the chemical side of drugs. There are basically three types of drugs: the natural drugs, semi-synthetic drugs, and the synthetic drugs. The synthetic drugs are the most problematic part at this moment, and because they are habit forming, and they are the most deadly drugs, that once you fall into the trap of these synthetic drugs, you won't be able to come out without severe intervention. And even at that point, there will be chances that there will be a relapse of your issues and your problems. So pharma industry is dealing with this synthetic drugs. They are creating this drug, they are marketing this drug. So every person who is related with the pharma industry has some role to play in the drug demand reduction at some point of time, and everybody should feel themselves as empowered to carry forward this flag in order to save the society, and the future of your children also. Because healthy society means healthy
future generations, and thereafter only you can just think about a healthy nation. So if you are able to provide a better environment to the society, future generations will naturally be the healthy ones and the safe ones, and thereafter the nation building starts. The current endeavor of our Prime Minister is to build a nation. It is for India, for the sake of India. So India can only be made when everything is on the positive side. No, nothing is on the negative side. So being in pharma industry, again I'll say that you have great responsibilities. You will be taking over the great responsibilities as a student, as a future flag bearers. You have great responsibilities to play, and I exhort you to just feel this empowerment within yourself, and just please do something that this drug menace is somehow reduced from the society. Prevention, when we talk about prevention, is related to family means once you are within your family, if you have you are facing some problem or something, then you can go for the family treatment. The members in your society, they are there to help you out. Then there is a school, they all have great responsibilities. And then community, the most important part is the community. I give most emphasis on the community, because the person who is suffering with this problem naturally remains with the family is the ultimate receiver of the individual. But if we have number of people who are suffering from this drug menace, naturally they will be a part of community at some point of time, and they will be creating some sort of disharmony in the society also. So not extending my speech a bit long, because you have the lectures also lined up. I would exhort all the students that are listening to me, all the faculty that are there to educate these people, also to inculcate the moral values and moral side of the drug disharmony that is being faced by the society, to inculcate this thing in their students, so that they can become a better business and entrepreneurs, better business dealers, and they can be the rich flag bearers of the healthy society in the future to come. Thank you so much. Thank you so much, sir, Thank you very much, sir. for such an inspirational work on NDPS. We are very thankful to NCB for conducting such awareness camp. It will be very beneficial for our society, sir. Thank you. Now I like to introduce Dr. M.M. Patel, sir. Sir is a former Vice Chancellor of Hemchandracharya North Gujarat University, Patan, Gujarat. Sir is the provost in Sabarmati University, and he is the director of Sri Swaminarayan Sanskar Pharmacy College, Dundar, every time for his sharp blessings and guidance. Sir has completed his B Pharma and M Pharma from Allen College of Pharmacy. Sir has more than 40 years of experience in pharmacy field. Sir has guided 34 M Pharma students and 56 PhD students. Sir has received Lifetime Achievement Award by APT at Bareilly, UP. Over to you, sir. Good morning to all on this occasion of webinar on narcotics, drugs and psychotropic substances is sponsored by Gujarat Gujarat Science and Technology and DST. And today's our learned chief guest, Sri Shailendra Kumar Mishra sir, is the Zonal Director of NCB, Narcotics Control Bureau. He talked regarding that so many things regarding that drug abuse and the substances. And today's learned speaker is, to wait for him, Amit Kumar Khare, Intelligence Bureau Office in NCP. They will say so many things regarding this narcotic drug and psychotropic substances. That narcotic drugs and psychotropic substances is built
is passed, published in 23rd August 1985 as a become a Act 1985. After that, it commenced on 14th November 1985 and assented in 16th September 1985. After that, amended made in 2014, 2017, and 2019. Regarding that, how to use and control of the drug, just sir had said that the main role of manufacturer, because three types of the drug is there: natural, semi-synthetic, and synthetic. Generally, the manufacturers are made that synthetic drugs, and so many drugs the people are using: chlorpromazine, alprazolam, clozapine, amphetamine, carbazepine, amitriptyline, amphetamine. Numbers of drugs are there, but the problem is the misuse or overuse. The sir had said the misuse and overuse. I think that society is more worried regarding the drug abuse. Their survey before 2 years, then the age of 18 to 35 years, A and C, they about 70% are suffering from this psychotropic problem, and the problem are by made some personal or some society or so many things reason are there. Even that they said that qualified person will help us, but somewhere I found the qualified person are more drug abuse or addicted. That's for example, those are related in the medical, they're serving in the field as a doctor, as a nurse, as a compounder, as a pharmacist, and even the peon are more addicted by this narcotic drugs, because of, I think one reason is it is easily available of the drug for them, and to prevent them. Actually, the words is came from that from California in 1953 regarding for that psychotropic thymidine. The headquarters is California, and they had addicted to helpline started for this. Even in everywhere in India, in all the state, they have a help center is there for to aware regarding that and to make free from that addiction. Somewhere, suppose that natural drug is the morphine, but semi-synthetic and synthetic drug. Suppose that after operative surgeon in surgery, after operation, somewhere pain is there, doctor provide the painkiller, but somehow any problem, the painkiller is not effective. At that time, they need a morphine injection or to control the pain. And on a long use of this, it may be the person become an addict. And in the society also, the students at presently, we have a problem of that youth, they are more addict regarding all these drugs and other alcoholism and everything. Because of that, one is the main problem is that thinking, society, and status of society. So many reasons is there, but we have to do for the youth, to save the youth for the nation, because Mahatma Gandhi has said that the powerful or the youth is there, it is a asset, and weak youth, it is a our what called that dev means that for that for nation. And if they are suffering with or with the drug with addiction and without control, means it is become, they will try to away from that, otherwise it will be for the nation is a great loss for that. I think I don't take more time. I thanks to both the chief guest and our learned speaker Amit Kumar. They have spared a time for us. I especially thanks of behalf of Swaminarayan Sanskar Pharmacy College and my personal for sparing a valuable time and giving that that informative talk for that.
I thanks again to giving me chance to our principal Kunal, Madam Aksbhai, and all the faculty member of the Sri Swaminarayan Sanskar Pharmacy College. I thank you again all the participants. I congratulate the participants to join for this. Thank you very much. Thanks. Thank you so much, sir, for sharing for inspirational words. Now it's a time for our technical session. I request all our guests to join the session if the time permits. However, if due to any commitments they want to leave, they may leave the session. Once again, we are extremely thankful to Shailendra Kumar Mishra sir for providing time from his busy schedule for today's seminar. Thank you so much, sir. I considered it a great honor to welcome Shri Amit Kumar Khare sir, Intelligence Officer, Narcotics Control Bureau, Ahmedabad Zonal Unit. During his tenure in NCB, he played a major role in effacing several quality seizures of narcotic drugs. He also played prominent role in bursting of elect laboratories. He had a vast experience in dealing with the operational and legal matters under NDPS Act 1985 and RCS Order 2013. Apart from enforcement initiative, Sri Amit Kumar Khare has been conducting drug awareness program in renowned educational institutions like IIM, IIT, Triple IT, etc. Today he will throw some light on hazards of drug abuse and preemptive and the corrective measures required to be taken. So, without wasting much time, I would request Shri Amit Kumar Khare sir to start today's session. Over to you, sir. Sir, you are not audible. Unmute your mic. Just unmute your mic, sir. Amit sir. Not audible, sir. Mic. Mic is not connected, sir. Actually, mic, your volume is very low. Speak, sir. Speak, Sir, speak from what we are side? audible to you, sir. Our voice is coming. No, sir. Still, you are not audible, sir. No, sir. Still, your voice is not coming. Maybe mic unmute. Mic unmute. Mic to unmute. Yeah, mic unmuted. Sir, नीचे Not working, sir. same or mic is option is You there. are not You can check audible it at out. all. Sir, you can disconnect. Yes, you disconnect. Okay. Participants, please stay connected with us. There is quite a technical problem is there. We will be soon connecting to you. Please wait. Okay. Amit sir. Sir, am I audible to you, sir? Yeah, Sir, but you are audible to your me. voice, you are not audible at all. Amit sir, I am you not are audible. not audible. Yes, now audible, sir.
Yes, your voice is coming, sir. Okay, my voice is coming now. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. Actually, there are some issues with connections over here, and we were No trying to No, problem. no interact with problem. them. Not an issue, sir. Not an issue, sir. Okay, so as I understand, there are audience who are faculties and students from discipline of pharmacy over here. Yes, sir. Almost, ma'am, sir, 50% pharmacy people were there, and 50% registration will be from all over the science field also, sir. Science field also. All over Okay. Gujarat, as well as there will be a certain participants who belongs to Madhya Pradesh and Maharashtra also, sir. There will be a Okay. 30 participants were like from Madhya Pradesh and Maharashtra. From other state also, we got the participants. Fine. That's absolutely fine. It's quite heartening to know that we have audience from across the country. That's quite Yes, sir. heartening to know. Right now, sir, Fine. already near about 190 participants have joined. Already they are available on YouTube, who is streaming our live session. Okay. Fine. So first of all, I would thank the management of this institute to provide us with this platform to have a discussion with you students, with the faculties of pharmacy and other streams, other science streams, and where we can put our word across the table. Now, without wasting much of time, we shall be wading into our presentation. Just as S.K. Mishra sir had told about NCB, that it is the chief drug enforcement agency of country which is responsible for fighting, for combating drug abuse in India, even abroad, where Indian perspective is concerned. Now, there might be some students or some audience would be thinking that, well, we have nothing to do with drugs. Neither we do drugs, neither we are taking drugs, neither we have any plans of going for drugs. Then, what would be the purpose of our sitting here? There would be some other guys who would be thinking that I have taken some intoxication in the past, and yet I didn't face any sort of problems. Then, still, if you are saying that drugs are a hazard to one's life, drugs are a hazard to, I mean, whatever you are saying, to society, to individual, they are saying that we had intoxication. We had intoxication in the past. So what's big deal in that? Some of you may be thinking that we do have friends and we know that they are doing drugs. So if that's happening, why should we be worried? And why should we be on this platform in the first instance? So, to all of you, I have just one word. During the course of our presentation, we'll be going to know what exactly what exactly these drugs are going to do, and all your I will say reservations, your apprehensions will be resolved in due course of time. मैं थोड़ा सा आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है? A few instances, real life instances of crimes where we will see that how intrinsically drugs are related to crime, how they are connected with crime, and the manner. Imagine a scenario where a dacoity takes place in broad daylight. So कहते हैं दिन दहाड़े लूट मची, दिन दहाड़े किसी घर में लूट हुई, ठीक है, डकैती हुई, घर में सारे सदस्य घर के अंदर ही थे, ऑल द मेंबर्स वर इन द हाउस इटसेल्फ, और फिर भी बाद में उनको ये समझ नहीं आता है कि हुआ क्या है. दे आर सिंपली अनेबल टू रिकॉल एज टू व्हाट इंसिडेंट्स हैपेंड विद देम. कैसे आया, बस हमें पता है कि दो लोग आए थे, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, उसके बाद हमने जब देखा तो पूरा खाली था, ठीक है. स्टिल वर्स, a person is kidnapped and he is unable to recall what happened with him. Another instance, women, a very unfortunate instance that a woman is sexually assaulted, and after some time she's when she comes to her senses, she is unable to recall what happened to her. And the worst thing is that even the law enforcement is unable to punish the culprit because they don't have any clue about him. Neither they have any clue, neither they have any evidence, nor they have any witness. And the culprit gets scot-free. So these are some of the incidents where drug play a pivotal role, and we can see how drug and crime are so intrinsically related.
Fine. And now, since we have 50% of pharmacy students here, we would really appreciate that you will play a very prominent role in making others aware about the new psychoactive substances. Now, what are psychoactive substances? Psychoactive substances are those substances which are not in the legislature, which are not covered in the act, but still they are abused and they pose a challenge due to that tendency of being abused. And as we see, every day new psychoactive substances are emerging, and it is not possible for a government to include each and every psychoactive substances every day in the legislature, because many of them, they have their own use, they have their own industrial use, they have their own pharmaceutical use, so it is not possible to include them in the legislature every day. Besides, it will make the genuine user suffer. So in view of all these things, we will initiate a presentation, and I hope that after this presentation the audience will have a fairly good idea about the threat which these drugs are posing to them as an individual, as a society, and as a nation. Right? Now, before initiating this presentation, I will also like to throw some light upon the profit margin which is there in the dealing of these drugs. For example, almost every one of you must have heard about opium. जो लोग एमपी से हैं या महाराष्ट्र से, इवन जो गुजरात से हैं, अफीम ऐसी चीजें जिनके बारे में सबने सुना होगा, अफीम, गांजा, चरस, ऐसी चीजें जिनके बारे में मुझे पता है कि सबने सुना ही होगा इनके बारे में, ठीक है. These are the commonly known drugs. Fine. Now, if we talk about opium, okay, so opium is grown in the, it is licitly grown in the notified areas of Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh. Now, the price which government is offering to the peasants, right, to the farmers for opium is about 1852 rupees per kg. This is the price which is offered by government of India to the peasants. And if we now talk about the grey market, the price rises to 1.5 lakhs per annum, 1.5 lakhs per kg. Now you can just see the huge difference. There's a huge profit margin, and this is what allures the culprits to enter into this trade. Right. So you would have got a fair idea of how these drugs are detrimental to the well-being of a society, to the economy of a society. In the past, in Mexico and in some Latin American countries, there were parallel governments going on. And the drug mafias, they grew so great in their stature, in their economy, that they were running parallel governments. Since there are some issues in the connection, I will be going with the presentation now. Sir, your screen is now visualized. Your computer screen is also, we can see it. Okay. Actually, thank you that. Sir, in their computer, there will be a share option. Option is there. Below Exactly. there will be a, yes. Exactly, I'm going by that only. But Then there will be two option: video sharing or screen share will be there. Whole screen share will be there. You can select screen. Exactly. Yes. Windows screen share, select Windows screen. Yes, sir. Sir, now we are able to. Once again, it was disconnected. So try it once again, sir. Okay. Yeah, I'm trying once again. Now I guess my screen is visible to all. Sir, now it is visible, sir. Not visible. Okay, thank you. One sec, sir. Just one sec. Yeah. दिख रहा है आपको? Sir, screen is loading. It might be taking a little bit of. Yes. Now it is visible, sir. Fine.
Actually, there are some network issues at our office, so I request Yeah. you all of you Quite to fine, kindly bear sir. with us for some time. No, not an issue, sir. Not an issue, sir. Take your time, sir. Fine, sir. It is visible. Yeah, now the screen is visible. It is visible. Slide is visible. It's visible now. Fine. So we'll be moving further in the course of our presentation. We have talked about Narcotics Control Bureau. We have seen that it is the nodal drug law enforcement agency of country. And as I told you, why one should be concerned about drugs. Now, just just imagine a scenario. If a person is taking drugs, कोई बंदा अगर drugs ले रहा है, so what he or she is doing, I will tell you. We all have heard about गांजा. गांजा के बारे में सबने सुन रखा है. अब आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जो गांजा की जो सर्वाधिक पैदाइश है, गांजा इज कल्टिवेटेड इन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश एंड इन सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, एंड इट इज कल्टिवेटेड अंडर द एजेस ऑफ नक्सलाइट्स. जो नक्सलाइट हैं उनके संरक्षण में इसकी पैदावार होती है गांजा की. ठीक है. सो एनीबडी हु इज स्मोकिंग गांजा, हु इज टेकिंग वीड, अदर नेम्स ऑफ गांजा आर marijuana, weed, these are the common names, green. Fine. So anyone who is taking weed or green or ganja, so what he is doing, he is funding the Naxalites, he is funding the antisocial elements. Similarly, if we talk about hashish, hashish is grown in Jammu and Kashmir and in parts of Pakistan. So anybody who is taking hashish, what he is doing, he is directly financing the antisocial elements. Am I clear? Now, Gujarat is having a long border and there are so many ports, and in recent past there have been many seizures of drugs in significant amounts. In 2017 there was a seizure of about 1500 kilograms of heroin at Porbandar port, right? And the heroin had been sourced from Iran. In 2019 there was a seizure of about 312 kgs of heroin and methamphetamine that was sourced from Pakistan. Fine. And the plan was to distribute it to various parts of the country. So the Indian Coast Guard, they intercepted it in the high waters, and then it was taken up by DRI at Jakhau port in May 2019. So one can imagine that if he is going for drugs, what he is doing, he is directly financing the antisocial activities. I hope that is clear to one and all. Fine. Now we'll briefly go about the drug architecture in India. हमारे यहाँ जो ड्रग कंट्रोल के लिए भारत सरकार ने जो आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, जो सिस्टम बनाया है, हम थोड़ा उसको समझेंगे. ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में वी हैव द फेडरल एजेंसीज और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज. वी हैव सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स. Actually, this is that department which is responsible for cultivation of opium, for purchase of opium, etc. I was telling you one thing, that India is one of the it ranks third among the countries in terms of production of licit opium after Australia and USA, I guess. तीसरा नंबर है विश्व में ओसीएम के वैध प्रोडक्शन में, in licit production of opium. Fine. So now this agency, Central Bureau of Narcotics, headquartered at Gwalior, this is responsible for production and procurement of opium, cultivation, production, and procurement of opium. Then we have customs. We have all heard about customs. DRI is that, Department of Revenue Intelligence. It's a part of customs. We have border guarding forces like BSF, Assam Rifles, ITBP, etc. Fine. These are the federal agencies. At the right hand side, we have state police, state excise, and in some states, even the forest department has been authorized for under NDPS Act. And then you can see that NCB sits at the top. As I told you, it is the nodal drug enforcement agency of the country. So it coordinates and synergizes actions between various drug enforcement agencies. Also, we can see there is Ministry of Social Justice and Empowerment, MSJE, and Ministry of Health and Family Welfare. So these are the two departments
departments, these are the two ministries actually which are responsible for demand reduction. अभी supply reduction क्या होता है, demand reduction क्या होता है, ठीक है, चलो इसको भी जान लेते हैं. Supply reduction क्या होता है? Catching of traffickers, nabbing traffickers, arresting them, fine, seizing the drugs, putting the traffickers behind bars, putting the traffickers behind bars, and like all these enforcement activities, they come under supply control. तो हम जब ड्रग कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है, हम जब ड्रग अब्यूज कंट्रोल की बात करते हैं, so there are two aspects which are closely connected. One is supply control, enforcement part, जिसका भी बारे में मैंने अभी बताया. Second is demand reduction. ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं, this awareness program, this is the part of demand reduction. Demand reduction means creating awareness among the masses. सबसे पहली बात है. तो अभी recently ये देखा गया in recent years that supply reduction by itself is not sufficient to contain this menace of drug trafficking. आप सिर्फ enforcement activities से ये जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस नहीं कर सकते. उसके लिए लोगों में जागरूकता भी पैदा करना जरूरत है. लोग जागरूक हों ये भी जरूरी है साथ ही साथ, ठीक है. तो जैसे हम अभी जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोग जागरूक होंगे, आगे आप और उन लोगों को बताएंगे जो आपके संपर्क में आएंगे. फाइन. सो दिस चैन विल कंटिन्यू एंड वंस the masses get aware about the menace of drug trafficking, automatically they will not go into drugs. The idea is behind that. Second thing is de-addiction center. ये जो नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, ठीक है, वो भी इसी का पार्ट है, डिमांड रिडक्शन का. तो भारत सरकार की जो ड्रग कंट्रोल स्ट्रेटेजी है, इसके ये दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट्स है, सप्लाई कंट्रोल एंड डिमांड रिडक्शन, ठीक है. अब बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू एड्रेस, first thing is, like you can see, effective interdiction and enforcement. Obviously that is what we are doing, but that is what state police is doing, customs is doing, all drug enforcement agencies are doing. Enforcement part, crop control. अगर कहीं अवैध खेती होती है, अफीम की, गांजा की, चरस की, मतलब अफीम की या गांजा की, चरस तो खैर गांजा से बनता है, ठीक है, तो या किसी भी ड्रग की, अभी जैसे खाट लीव्स है, खाट पत्ते भी अभी एनडीपीएस एक्ट के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं. तो इस अवैध खेती को नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ इलिसिट कल्टीवेशन. एक आप जो तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल. अभी मैंने आपको बताया, जस्ट नाउ वी हैड सीन द केस ऑफ ओपीएम. फाइन. I told you that the licit price offered by government of India to the farmers who cultivate opium is 1852 rupees per kg, and in black market the price which is offered is 1.5 lakhs per kg. This huge difference itself speaks volume that what prompts one to go for trafficking, for diversion from licit to illicit channel. Fine. Similarly, if you talk about methamphetamine, methamphetamine ऐसा ड्रग है जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज से, a person having a little bit of technical know-how, fine, उसको अगर ये पता हो मुझे कौन से केमिकल्स यूज करने हैं, थोड़ा बहुत know-how पता हो उसको कि मुझे मतलब कौन सी प्रोसेस मुझे लेनी है, there are 2 or 3 processes for manufacture of methamphetamine, so he can manufacture it at home. While I was posted in Indore, we had a case in 2015, and a person who was very much in the very heart of the city, बिल्कुल सिटी के मध्य भाग में बैठे हुए, he had taken 2 flats on rent, 2 1 BHK flats he had taken on rent, and he was manufacturing methamphetamine there. So when our team raided there, we found alprazolam and ephedrine in his premises. So that was quite shocking. A small setup is required. You don't need to have a very large setup or something very complicated. A small setup and technical know-how and availability of some of the chemicals like ephedrine and pseudoephedrine, that is sufficient for manufacture of methamphetamine. अभी methamphetamine क्या है? Methamphetamine, ephedrine और pseudoephedrine, मतलब using raw materials it is synthesized. अब उसकी जो international market है, international market में इसकी जो price है, that is about 15 crores per kg. Fine. And it has serious effects on one's health. चलो हेरोइन की बात करते हैं. हेरोइन की अगर हम बात करते हैं, हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ओपियम. कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा. यूजिंग एसिटिक एनाइड्राइड. So using acidic anhydride, heroin is manufactured from opium. Fine. And the price of heroin
in those areas where it is synthesized illegally. एमपी में, राजस्थान में कुछ मतलब, क्योंकि जहां पे की अफीम की खेती होती है, वहां पे जहां हेरोइन सिंथेसाइज की जाती है इलीगली, अगेन इलीगली, जहां हेरोइन इलीगली सिंथेसाइज की जा रही है, वहां पे हेरोइन का प्राइस है अबाउट 50 lakhs per kg. एंड वंस इट जस्ट कम्स आउट ऑफ दो स्टेट्स, एक बार एमपी से निकल के अगर गुजरात में आ गई, उसकी प्राइस होगी 1 crore per kg, 1 crore per kg. Fine. Once it hits the international market, its price goes to about 10 to 15 crores per kg, depending upon the content of morphine in it. उसकी क्वालिटी को देखते हुए, ठीक है, प्राइस 10 करोड़ से 15 करोड़ है पर केजी की. कहां अफीम के 1800 रुपए, थोड़ा सा डाइवर्शन हुआ, करोड़ों में पहुंच गई अच्छी बात. फाइन. सो ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल. सो देयर इज अ लॉट ऑफ illicit money involved in this trade. And ultimately, this money, where it is funded? For international activities. Then we have dismantling narco-terrorist nexus. Narco-terrorism एक coin है. बस वही जो मैंने आपको बताया कि ultimately सारा पैसा कहाँ जा रहा है? This is going towards funding of international activities. So that is narco-terrorism. International cooperation. Fine. Then synergy among all agencies with NCBS nodal authority. With this we have seen earlier. If we have a look at the geographical location of India, पहले हम बात करते हैं इस डायग्राम में आपको जो दिख रहा है, we can see there are two things, golden crescent and golden triangle. Actually, there are two major opium cultivation regions in the world. First is golden crescent and second is golden triangle. ये वो क्षेत्र है जहां विश्व में सर्वाधिक अफीम की illicit अवैध खेती की जाती है. तो एक जो है उसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है. दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आता है. ठीक है, अब आप देखेंगे इंडिया इज सैंडविच्ड बिटवीन दीज टू रीजन्स. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पिल ओवर इफेक्ट. स्पिल ओवर इफेक्ट समझते हैं आप? अगर ट्रांजिट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली यहां पे डाइवर्शन होगा. एंड एज यू कैन सी, हाँ, शायद आपको मालूम होगा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो आफ्टर चाइना, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. ठीक है, हमारा सेकंड नंबर आता है वर्ल्ड में इन प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स. सो ये जो चीजें हैं, ये इंटरनेशनल जो ड्रग कार्टेल्स हैं उन्होंने देखी, एंड उन्होंने देखा कि काफी पोटेंशियल इंडिया में अगर हमें कुछ जो इलिसिट ड्रग्स अगर सिंथेसाइज करनी है. और अभी इन द पास्ट एनसीबी ने और दूसरे एजेंसीज ने कई ऐसी क्लैंडस्टाइन लैब्स, क्लैंडस्टाइन लेबोरेटरीज बर्स्ट की हैं जहां पे इलिसिट वे में ड्रग्स मैन्युफैक्चर की जा रही थी. So as you can see in this diagram, there are so many drugs which are manufactured in India or which arrive in India. अभी 2004 में एक 2004 there was a survey which was carried out by MSJ, Ministry of Social Justice and Empowerment, and the results were quite shocking. It was found that a large chunk of the youth is going for drugs. So after that, many initiatives were taken to address this issue. तो आप लोग क्योंकि भी कॉलेज में हैं, कई आप लोग ऐसे होंगे जो अपना घर छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं, यू आर लिविंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स. कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार बाहर निकले होंगे घर से. फाइन. सो ठीक है, कॉलेज में आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, दे आर योर गाइड्स. बट आफ्टर दैट, बट यू ओनली स्पेंड अबाउट 7 to 8 hours इन द कॉलेज. रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग इन योर रूम्स ओनली, जहां आपके जो पीयर्स हैं, योर पीयर्स, यू आर हाईली अफेक्टेड बाय योर पीयर्स. आई मीन यू आर हाईली इन इन्फ्लुएंस ऑफ योर पीयर्स. ठीक है, सो दिस एट टाइम्स क्रिएट्स प्रॉब्लम्स आल्सो. ये जो मैंने कोई बात की थी, तो बोलता है अरे ठीक है यार, एक कश लेके देख, कुछ नहीं होता. कि वो बोलेगा यार मैं तो ले रहा हूं और देख मेरे रिजल्ट्स देखो कितने बढ़िया आ रहे हैं, आई एम स्कोरिंग वेरी हाई ग्रेड्स. ठीक है, यू आल्सो गो फॉर इट एंड you will also feel the difference. The thing is that once a person goes for drugs, it is difficult for him, it is extremely difficult for him to step back. ठीक है, ये मैं बाद में पहले आपको बता रहा हूं. ड्रग्स जो होती हैं वो इस कदर एडिक्ट बनाती है कि उसके बाद अगर आप चाह के भी आप पीछे नहीं हट सकते. अगर आप सोचें कि नहीं यार अब बहुत हो गया, मैं जान रहा हूं कि मेरे ड्रग्स लेने की वजह से मेरी फैमिली को, मेरे आजू बाजू जो लोग हैं उनको कितनी दिक्कत हो रही है, अब मैं वापस जाना चाहता हूं. नहीं, आप चाह के भी नहीं जा सकते. For that purpose only we have de-addiction centers, and in this de-addiction centers the quantum of treatment varies as per the individual, as per the drug. Like for example, कुछ जो ड्रग्स होते हैं which are called hard drugs, उनका ट्रीटमेंट जो टाइम है वो भी ज्यादा होता है, कुछ का सालों में चला जाता है. फाइन.
सो दैट इज समथिंग कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम्स। तो कोई चाह के भी स्टेप बैक नहीं कर सकता है, देन उसको डीएडिक्शन सेंटर में एनरोल होना पड़ता है, ही हैज टू अंडरगो द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर लॉट ऑफ हिकअप्स ही कम्स फॉर्थ। तो ड्रग्स जैसे कि हम देखते हैं, अच्छा अभी मैं जब ड्रग्स की बात करूंगा तो आई विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट दो सब्सटेंसेस व्हिच आर इंक्लूडेड इन द एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ठीक है, एंड इन द आरसीएस ऑर्डर। जैसे ड्रग्स तो जनरली अगर मैं हम अगर इसकी बात करते हैं किसी भी पेन किलर, सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी सपोज पेनजोन है, ठीक है, या अपना मतलब जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीसीएम और पैरासिटामोल, जो ओवर द काउंटर ड्रग्स उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन सब्सटेंसेस की बात करूंगा जो, तो व्हेन आई से ड्रग्स आई मीन ओनली दो सब्सटेंसेस व्हिच आर इन द एनडीपीएस एक्ट, ठीक है। जनरली ड्रग क्या होता है? ड्रग्स इज एनी सब्सटेंस अदर देन फूड व्हिच इज टेकन टू चेंज द वे द बॉडी और द माइंड फंक्शंस, दिस वी ऑल नो, ठीक है। आप फार्मेसी के स्टूडेंट से आप जानते हैं, इवन अगर आप नहीं हैं, so you may be knowing that drugs tend to have an effect on the body and the mind. Now, if we talk about narcotic drugs, these are those chemicals which affect the CNS system, the central nervous system, okay, by inducing intoxication or similar changes in mental functions. So these are the substances which directly affect the CNS system. आपके जो CNS system होता है, मस्तिष्क होता है आपका, ये directly affect करते हैं, ठीक है। Some commonly known drugs are heroin, cocaine and charas, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, once they start affecting your central nervous system, much of the actions which you take under the influence of these drugs, they are involuntary. अभी involuntary actions कितनी घातक हो सकती है ये हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। बट जैसे मैंने बताया कि much of the actions which the person takes is involuntary, so he can be made to do something which he or she would not do otherwise in the normal course of actions. So we are seeing these are the commonly known drugs जिनका नाम आपने कभी ना कभी सुन रखा होगा। हेरोइन जिसको हम ब्राउन शुगर बोलते हैं, जिसको हम पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको मड बोलते हैं। कोकेन, कोकेन के बारे में आपने सुन रखा होगा। आपने ये भी सुन रखा होगा पास्ट में कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए थे where the athletes they had gone for doping means taking of such substances which enhance the CNS activities. देखिए एक चीज को आप समझिए, इमोशंस जो होते हैं, ठीक है, फीलिंग ऑफ सैडनेस, ठीक है, देन जो फीलिंग्स होती है, टायर्डनेस, इट्स अ फीलिंग। इफ अ पर्सन फील टायर्ड, इट इज फीलिंग, ठीक है। कोई जो ऐसा आदमी है जो 3 घंटे काम करके कोई स्पेसिफिक काम करके थकता है, कोई आदमी है जो वही काम 9 घंटे करके भी नहीं थकेगा, ठीक है। तो दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सो बेसिकली दीज आर फीलिंग्स। टायर्डनेस इज अ फीलिंग, इमोशन इज अ फीलिंग, सैडनेस इज अ फीलिंग, एक्सटेसी, जॉय इज अ फीलिंग, ठीक है, डिप्रेशन इज अ फीलिंग एंड दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई बंदा उसे कैसे लेता है, कोई बंदा उसे किस कॉन्टेक्स्ट में लेता है, ठीक है। एक बंदा उसे बहुत ही सीरियसली ले सकता है और दूसरा बंदा उसे काफी कैजुअली ले सकता है। बट द थिंग इज दैट दीज थिंग्स अफेक्ट द बॉडी, ठीक है। नाउ स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट इमोशनल टर्मोइल, डिप्रेशन, दीज अफेक्ट द बॉडी, ठीक है, मींस दे हैव hazardous effect on the body in the long run. Now here comes the यहाँ पे ड्रग्स का अब वो आता है, ठीक है। Now here the drugs come into picture. How? If a person is under severe depression, if he is under severe emotional turmoil, उसका कोई साथी है जो कि मैं बोलूंगा नालायक है, वो बोलेगा यार थोड़ा सा इसको लेके देख, ठीक है, थोड़ा सा इसको जस्ट चख के देख, एक कश लेके देख थोड़ा सा इसका। अब आपके पीयर हैं, आप होंगे ठीक है यार वैसे भी मैं टेंशन में तो हुई सही, डिप्रेशन में तो हुई सही, ठीक है। एक बंदे ने थोड़ा सा ले लिया, आफ्टर दैट उसको लगा कि वाह मैंने कितना रिलैक्स फील किया, ठीक है। ही फील्स एज इफ हिज मसल्स हैव रिलैक्स्ड। वो जो बार बार जो थिंकिंग टेंडेंसी हो रही थी, एक ही चीज पे जो ध्यान केंद्रित हो रहा था ना चाहते हुए भी, ठीक है, तो ही फील्स रिलैक्स्ड। So now what happens is that whenever he feels stressed out, depressed, he again takes a dose of the drugs, and very soon he falls into the vicious circle. The vicious circle is that now he अब अगर कल को अब अगर कुछ दिन बाद वो सोचे कि नहीं अब मैं अब बहुत हो गया, ठीक है, अब मेरी जो प्रॉब्लम थी वो भी चली गई है या मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे स्टेप आउट कर देना चाहिए, अब वो चाह के भी नहीं कर सकता। और दूसरी बेकार चीज ये है कि जो उसका थ्रेशोल्ड है ड्रग्स लेने का, दैट विल इंक्रीज नाउ। तो जहां पहले मान लो एक दिन में 0.5 ग्राम्स ले रहा था, नाउ ही विल रिक्वायर 1 ग्राम्स।
ठीक है, उसके बगैर फिर उसकी बॉडी जो है ना वो एक अंदर से रिवल्शन टाइप करेगी, हिज बॉडी विल रिवोल्ट फ्रॉम इनसाइड, हिज बॉडी विल नॉट अलाउ, हिज सीएनएस सिस्टम विल नॉट अलाउ हिम टू ड्रॉ बैक, टू विड्रॉ। चलिए हम कुछ नॉर्मली कॉमनली अकरिंग ड्रग्स देख रहे थे, ठीक है, वी हैड सीन हेरोइन, कोकेन, चरस, जिसका आपने नाम सुन रखा है, ठीक है। देन देयर आर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कॉल्ड एम्फेटामाइन्स एंड एलएसडीज। एलएसडी, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज एलएसडी पेपर, दिस इज एलएसडी ब्लॉटर पेपर। इसकी जो एक आप जो डायग्राम देख रहे हो ना, देयर आर डायग्राम्स ऑन दिस एलएसडी ब्लॉटर पेपर। सो टिपिकली दिस डायग्राम इज इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया and it typically costs about 4 to 5,000। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया जो है एलएसडी का, अब ये जो सुशांत सिंह केस हुआ था शायद इसमें आपने एलएसडी और ये कुछ ड्रग्स के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो एलएसडी है, इसका जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है एरिया, इसको जनरली क्या होता है, दिवाली के टाइम आपने देखा होगा बच्चे जो वो फटाके छोड़ते हैं ना गन से, वो जो गन के अंदर जो रखते हैं और वो फटाके छोड़ते हैं, तो उसमें कैसे वो थोड़ा सा उभरा होता है, जहां पे वो बारूद भरा होता है थोड़ा सा, तो इट इज लाइक दैट। तो जहां ये ड्रग्स एम्बेड की होती है, दैट एरिया इज स्लाइटली रिजन। So this is LSD and I told you how much it cost. हाँ, इसको how it is abused, it is just kept on the tongue and even class में बैठे बैठे there were instances where students were in the class and they were abusing these drugs. So it comes in pills also. अच्छा, अभी हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, ठीक है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? चलिए ठीक है, ये ड्रग थी, इसको मैंने एनडीपीएस एक्ट में ला दिया, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनडीपीएस एक्ट में ला दिया, ठीक है, फाइन। So now that is controlled by the government, it is either prohibited or controlled, okay, or one or the other agency will exercise control upon that drug. But is it possible to include petrol, glue, ink removers in any act? So these are called, as I told you at the very outset of this presentation, that we have something called new psychoactive substances. And these are the substances which are really a challenge for the law enforcement agencies and for the society at large. There are children who are abusing these substances. अब इसका क्या करें? Kerosene है, polish removers है, so it is practically impossible to keep a control upon these substances. Fine. So here comes the purpose of awareness programs. So if you are aware, you will make others aware. आप उनको अवेयर करेंगे कि सब्सटेंस अब्यूज ना लें, बिकॉज क्या होता है जनरली व्हाट स्टार्ट्स एज अब्यूज ऑफ दिस सब्सटेंसेस अल्टीमेटली इट लीड्स टू ड्रग अब्यूज। जैसे हमने अभी देखा था कि जो थ्रेशोल्ड होता है एक पर्सन का फॉर टेकिंग ऑफ ड्रग्स, दैट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है। सो इनिशियली इट स्टार्ट्स विद दिस volatile solvents or what we call non-psychoactive substances, right? Sorry, new psychoactive substances. He goes, then thereafter he goes for soft drugs, then hard drugs, and in this way he falls in the vicious circle of drugs, from where he finds very difficult to withdraw himself. And up to this point, he has made an irreparable loss to his life. आगे चलते हैं। मॉर्फिन की भी बात की थी सर ने, भी मॉर्फिन की बात की थी। सर ने बोला था कि मॉर्फिन इज एन एक्सेलेंट पेन रिलीवर, ठीक है। सम ड्रग्स आर एक्सेलेंट एनाल्जेसिक्स। कोडीन, जो लोग फार्मेसी से हैं या नहीं भी है, हमने कोडीन बेस्ड कफ सिरप बहुत इसके बारे में सुना है। कोडीन बेस्ड कफ सिरप कई लोगों ने लिया भी है, कोडीन बेस्ड कफ सिरप, ठीक है। बट द डार्क साइड इज दैट ये कोडीन है, जो कोडीन इज एन ओपियोइड, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम, फाइन। एंड द थिंग इज दैट due to this presence of codeine, even the codeine based cough syrups are abused. When there was a time when these codeine based cough syrups were not available in the market में available नहीं थे ये, and they were finding ways to northeastern states towards Bengal, from where they were smuggled out to Bangladesh. Bangladesh being an Islamic country, वहां पे liquor ban है, तो people were abusing this codeine based cough syrups. So this is the thing. So here only awareness can bring a change. Law enforcement itself, it can't effectuate the change which we desire. A drug-free world, a drug-free society. That is possible when awareness is created among the masses. ठीक है। But the thing is that आप बोलोगे कि ये ड्रग्स तो हमें डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। मुझे एक बार स्ट्रेस हो गया था, या मुझे डिप्रेशन था, या मुझे फला इश्यू था, मुझे डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब किया है, मुझे अल्प्राजोल की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब किए डॉक्टर ने। The thing is that majority of the drugs
हम जब एनडीपीएस एक्ट की बात करते हैं तो अफीम, गांजा, चरस, ठीक है, और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, अफीम, गांजा, कोकीन, ठीक है, और इनसे जो चीजें डिराइव होती हैं, लाइक कोडीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, मॉर्फिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, ठीक है, थिबेन, जो लोग फार्मेसी से शायद उनको पता होगा. So in this way there are about 26 derivatives of opium, and they have their own uses in the pharmaceutical sector, in the industrial sector. But since they have a potential to be diverted in the illicit sector, in the illicit market, they are controlled by the government. Some are prohibited, some are controlled. हम गांजा की बात करते हैं, गांजा से चरस बनता है, हशीश बनता है, ठीक है, so हशीश ऑयल निकलता है. गांजा में कंपोनेंट होता है which is called THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, जो हम अगर आम भाषा में बोलते हैं किक मिलती है, जिससे किक, that it is due to that THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल. अभी चलो इसी के साथ में एक और, हम जब ये एनपीएस सब्सटेंसेस की बात कर रहे थे, न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, सो वन मेजर इशू ऑफ कंसर्न इज दैट सिंथेटिक कैनाबॉइड्स हैव हिट द मार्केट, जिसमें जो टीएचसी कंटेंट है गांजा में या आपके हशीश में जो टीएचसी कंटेंट होता है उससे 100 टाइम्स ज्यादा है सिंथेटिक कैनाबॉइड्स, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी. अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी जैसे गवर्नमेंट हैज सेट अप लैब्स, ठीक है, एंड गवर्नमेंट सेट इट्स ओन, जैसे गवर्नमेंट की अपनी मशीनरी जो देखती है कि जब भी कोई एनपीएस मार्केट में हिट करता है तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए. देयर इज समथिंग कॉल्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑफ यूएनओडीसी. तो लेकिन अब इतने ड्रग्स इतनी मात्रा में आएंगे, तो अब ये यहाँ आप जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, यू हैव अ वेरी प्रोमिनेंट रोल टू प्ले. You can help the society in particular and the law enforcement as well. आपको अगर लगता है कि कोई न्यू सब्सटेंस ऐसा है जो कि सोसाइटी में एंटर कर गया है, जिसे लोग अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड विच इज अ न्यू कॉम्पोजिशन, यू कैन मेक अस अवेयर. आप हमें बता सकते हैं, ठीक है. सो वी विल टेक अप दिस टास्क टू आवर हायर फॉर्मेशंस, टू यूएनओडीसी. हम सब ने यूएन का नाम सुन रखा है ना, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, इस सब का नाम हम लोगों ने सुन रखा है. सो देयर इज अ गवर्निंग बॉडी, मतलब इट इज कॉल्ड यूएनओडीसी, United Nations Office on Drug Control. There is something called early warning system, ठीक है. चलिए हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा वो करके हैं. तो हम ये बात कर रहे थे कि आप ये बोलेंगे कि भाई मुझे भी डॉक्टर ने कभी प्रेस्क्राइब किया है ड्रग्स. तो डॉक्टर जो आपको ड्रग प्रेस्क्राइब करता है, वो डॉक्टर आपको सीमित मात्रा में आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको प्रेस्क्राइब करता है. बट अगर बगैर प्रेस्क्रिप्शन के आपने अपनी डिस्क्रिप्शन से, ठीक है, अपनी मनमर्जी से इन ड्रग्स को लेना चालू किया, सो दे हैव हजार्डस इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. एडिक्शन तो है ही सही, a person gets addicted, apart from that his body is very severely tormented. So we have seen when abused, these drugs cause stupor, coma, convulsions, or even death. Most of the drugs are fatal also. If you take them without a valid prescription, okay, they may be fatal to the person who is abusing them. So we have seen why people take drugs. Generally, when they enter college, when they enter adolescence, they find that they are not able to. The first thing is that inaccurate information, जिसके बारे में हमने बात की. कोई आपका दोस्त है, ठीक है, मैं उसको दोस्त तो नहीं बोलूंगा, अगर कोई भी बंदा आपको ड्रग्स के लिए प्रेरित कर रहा है, उत्प्रेरित, मतलब मैं कहूँगा दुष्प्रेरित कर रहा है, ठीक है. If he is discouraging you for taking drugs, discouraging in the sense, if he is wrongly encouraging you to taking for doing drugs, I will say he is not your friend, ठीक है. But anyways, कोई आपका ऐसा पहचान का है जो आपको बोल रहा है कि तुम आप ड्रग्स ले लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, you will score good grades, or he will say that यार एक बार कश लेके तो देख, you will feel cool. ऐसा कुछ नहीं इसके बारे में, it's a cool thing. So anybody who is projecting it as a cool thing is not your friend, and he is giving you inaccurate information about drug effects. So the first thing is that inaccurate information. You don't have proper information about drug abuse. Curiosity, or we can say experimentation. What starts up as an experimentation, it ends up in a very vicious circle. We have seen it. इसके बारे में मुझे बहुत स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. Then there is called rejection. During adolescence, some people they find themselves in some emotional turmoil. They think that they are not able to come out of this turmoil, and then here comes drugs. They take drugs. Drugs से जो प्रॉब्लम है वो तो अपनी जगह पे रह गई, ठीक है. प्रॉब्लम इज एट इट्स ओन प्लेस. उससे तो आपको छुटकारा नहीं मिला, लेकिन आपने अपने आप को एक और बवंडर में
फंसा लिया। अब बवंडर, ये जो प्रॉब्लम है कितनी सीवियर है, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखते जाएंगे। हमने हेल्थ इफेक्ट्स क्या है इसके तो हमने देख लिए हैं, ठीक है। So we have seen that stress, poor self-image, anger, rejection, etc., which we can keep under the category of emotional turmoil, they force a person to go for drugs. So what starts up as an experimentation or occasional or irregular use, that waits up into regular use, and that ultimately culminates into dependence or addiction. Okay. So this is the trajectory of drug abuse, and then again from softer to harder drugs. अब लोग बोलते हैं कि अल्कोहल टबैको तो हम ले रहे हैं, ठीक है, ये तो ठीक है, गुजरात में लिक्वर पे प्रोहिबिशन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ लिक्वर पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है, टोबैको पे तो कहीं कोई प्रोहिबिशन नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, हम तो ले सकते हैं इसको। द थिंग इज दैट अल्टीमेटली दीज इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस पेव योर वे फॉर ड्रग्स। जैसे मैंने बताया था, अ पर्सन डेवलप्स, his threshold gets increased. Gradually, he finds that he is not being satisfied by the dose of drugs which he was taking hitherto. अभी तक जितना ले रहे थे उससे satisfaction नहीं मिल रहा है, now ज्यादा लेंगे तो बॉडी को satisfaction मिलेगा, आपके माइंड को तो satisfaction मिलेगा। So ultimately he goes from intoxication agents to soft drugs, to hard drugs, to severe drugs. So my only request to you, my exhortation to you is that don't go for drugs, ठीक है, in short, nutshell। अभी हम उसके हार्मफुल इफेक्ट्स और देखेंगे। जैसे हमने देखा था, दे एक्ट ऑन ब्रेन, फाइन। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये ब्रेन पे इस तरह एक्ट करते हैं कि जो आपकी जो बॉडी है वो ड्रग सीकिंग बिहेवियर आ जाता है बंदे में। आपकी बॉडी कहती है कि मुझे और चाहिए, मुझे एलएसडी और दो, मुझे जो भी ड्रग्स हैं जो भी अब्यूज कर रहे हो। एंड सम ड्रग्स आर सच, उनका नेचर इस तरह से होता है कि इवन अ स्मॉल डोज कैन मेक अ पर्सन एडिक्ट ऑफ देम। एक छोटा सा डोज, एक ड्रग है अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है, दैट इज कॉल्ड फेंटेनिल। फार्मेसी के स्टूडेंट्स ने नाम सुना होगा शायद, फेंटेनिल, ठीक है। उसका जो प्रिकर्सर केमिकल है दैट इज कॉल्ड एनपीपी और एपीपी, ठीक है। सो इसके द्वारा फेंटेनिल बनाया गया, और इसकी जो गवर्नमेंट ने इसकी जो मात्रा जैसे कॉमर्शियल बनाया है कि जिसको लेने पे आदमी को 10 साल की सजा हो सकती है, दैट इज ओनली 0.05 मिलीग्राम। अभी कॉमर्शियल क्वांटिटी क्या है, स्मॉल क्या है, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें। तो हम ये देख रहे थे कि ड्रग्स इस तरह से इफेक्ट करते हैं कि इवन छोटा, कुछ ड्रग्स का इवन जो छोटा सा डोज है, स्मॉल डोज कैन मेक अ पर्सन एडिक्ट। सो व्हाट आर द साइंस दैट वी नीड टू लुक आउट फॉर ड्रग अब्यूज। आपके आसपास अगर ऐसे कोई बंदे हैं जो आपको लगते हैं कि आपको अगर ऐसा सस्पिशन आ रहा है कि जिनके बिहेवियर में, जिनके अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, और आपको सस्पिशन हो रहा है कि उन्होंने ड्रग्स लिए, सो यू शुड रिपोर्ट दिस मैटर टू योर हायर अथॉरिटीज, टू योर कॉलेज, टू योर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आप उनको रिपोर्ट करेंगे। मैंने बताया था आपको, ड्रग्स जो बंदा ले रहा है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज को डायरेक्टली फाइनेंस कर रहा है, और ये हमने एक दो एग्जांपल से देखा था, ठीक है। सो नाउ इफ यू देन देयर आर सम फिजिकल सिम्टम्स लाइक डल लुकिंग, ग्लेज्ड आईज, ड्राउजीनेस, रनिंग नोज, ये मतलब एब्रप्टली सिम्टम्स आ जाते हैं। दिस सिम्टम्स अकर सडनली in an otherwise healthy looking guy, ठीक है। The most important is needle marks. If you see needle marks over जैसे हाथ पे हैं, हाथ पे अगर आपने देखा, मतलब एल्बो से लेकर उंगलियों के बीच में कहीं आपके देखें कि there are profusely needle marks, so you can be sure that he is going for drugs। मतलब ये सब तो symptoms है ही, like drowsiness, running nose, उसके साथ आपने ये भी देख लिया, then you can establish that there is something really fishy in this and there is time to act, ठीक है। इसकी काउंसलिंग करना जरूरी है इस बंदे की, एंड एट द सेम टाइम इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट दिस मैटर टू द हायर अथॉरिटीज। देयर आर फिजिकल सिम्टम्स लाइक वेट लॉस, मालन्यूट्रिशन, ठीक है, ट्रेमर्स, हेलुसिनेशंस, उस बंदे को ट्रेमर्स बोलते हैं ना, ही एक्सपीरियंसेस ट्रेमर्स इंटरमिटेंटली, ठीक है। देन देयर इज अ कांस्टेंट डिजायर फॉर जंक फूड। ये जो है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जंक फूड, तो ठीक है, इवन आई एट टाइम्स हैव कांस्टेंट आई हैव डिजायर फॉर जंक फूड, ठीक है। दिस इज इन कंजंक्शन विद अदर फिजिकल सिम्टम्स। इन सिम्टम्स के साथ अगर ये कांस्टेंट डिजायर फॉर जंक फूड आता है, सो यू कैन मेक आउट दैट समथिंग इज रियली फिशी विद द मैटर। तो देयर आर बिहेवियरल सिम्टम्स, उसका बिहेवियर काफी इररिस्पांसिबल सा बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। आप देख रहे हो कि एक अच्छा खासा बंदा जो अभी तक काफी रिस्पांसिबली बिहेव करता था, जो काफी सही से रहता था, there is a sudden change in his behavior, he has become irresponsible, he is argumentative, he has lack of motivation, ठीक है, अकेला रहना प्रेफर कर रहा है, झूठ बोल रहा है बात बात पे,
और स्पीच उसकी ऐसी हो रही है जो काफी चेंज हो गई है, रैपिड स्पीच है या जो नहीं समझ आ रही है, स्लर्ड हो गई है, मींस देयर इज अब्रप्ट चेंज इन स्पीच, सो यू कैन बी श्योर दैट समथिंग इज रियली फिशी एंड यू नीड टू टेक एक्शन। मैंने बताया कि कॉलेज में कई बार आप लोग घर से बाहर हो, आपके पेरेंट्स हैं और टीचर्स भी एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके साथ हैं, तो ऐसे में यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ, यू हैव टू हेल्प योर कंपेनियंस, फाइन, एंड इट इज ओनली आफ्टर यू एक्ट दैट this menace could be addressed. So there are other symptoms like secretiveness. You will prefer to stay alone, falling grades, use of mouthwash mints. Actually some of the drugs, जैसे कई drugs को inject किया जाता है, कई को snort किया जाता है, कई को drink या they are taken orally. So इसमें क्या होता है, after abusing of the drugs, smell आता है मुंह से. So in order to conceal this smell, the person will use mouthwash, mints, gum profusely. ठीक है, so आप देखेंगे कि हर टाइम वो माउथ वॉश है या मिंट्स की हर टाइम मतलब वो ले रहा है, बहुत ज्यादा ले रहा है. सो बेसिकली इज ट्राइंग टू कंसील द स्मेल व्हिच विल बी कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ. देन देयर आर वाइट स्पेक्स ऑन नॉस्ट्रिल्स और क्लोथिंग. जैसे मैंने बताया कि कई हेरोइन है या कोकेन है, इसमें क्या होता है कि दे आर इंजेक्टेड और स्नॉटेड. अगर स्नॉट किया जाता है तो यू विल फाइंड दैट देयर आर मार्क्स ऑफ पाउडर्स ऑन हिज नॉस्ट्रिल्स पे या कपड़ों पे गिरा होगा पाउडर. So immediately आपके एंटीने खड़े हो जाने चाहिए. ठीक है, your antennas should raise immediately that something is suspicious and immediate action is required to be taken. Similarly, if he has frequent trips to the washroom, so these are all the indications that this guy may be an addict. So what are the cost? We have seen social cost. I don't need to elaborate much upon this. This is something that is self-explanatory and we all know. अगर कोई बंदा ड्रग्स लेता है तो obviously he can't live a normal life. He will have broken families, loss of reputation तो है ही, social stigma है, then school dropouts. I will just cite an incident. अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ 6-7 महीने पहले की बात है, लॉकडाउन के दौरान I had an interaction with the superintendent of the juvenile cell in Ahmedabad. अहमदाबाद में अपने शाहपुर में, शायद उन्हें शाहपुर बताया था मुझे, वहां पे जुवेनाइल होम है यहाँ पे. ठीक है, जुवेनाइल सेल है. सो वहां पे जुवेनाइल मतलब आपको पता है those persons who are less than 17 years of age, ठीक है, and who have committed some crime. So due to their age, they can't be convicted in the way which an adult is convicted. ठीक है, अगर 17 साल के ऊपर हो तो उनको ठीक है जेल में डालेंगे, अदरवाइज दे आर पुट इन जुवेनाइल सेल्स. ठीक है, जो बच्चों की जेल जिसे बोलते हैं आम भाषा में. ठीक है, तो बच्चों की जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे, एक बार उनसे मेरा अभी 6-7 महीने पहले आई हैड अ कन्वर्सेशन विद हिम एंड ही टोल्ड मी दैट उनके यहाँ जो बच्चे, मतलब जो क्राइम करके जो बच्चे आए हैं, अराउंड 50-60% ऑफ देम were under influence of drugs. This was shocking. यानी कि बच्चे 50-60% of the children of the juveniles had come in contact of drugs and after that they had committed crime. उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो वापस again they will indulge in these matters only. So this is something for which social awareness is very much required because they don't know the consequences, the ill consequences of going drugs. अभी तो ठीक है, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि जो आपके खुद के ऊपर जो consequences होंगे, अभी हम थोड़ा देखेंगे कि और क्या हो सकता है. If a person is taking drugs, if is doing drugs, what are the more severe consequences? ठीक है, हमने देखा there are legal cost, road accidents, domestic violence, crimes के हमने कुछ example लिए थे. I will cite one more example. This dates back to 2013 and that's in Indore. इंदौर में 2013 में होली के लगभग 1-2 दिन पहले की घटना है. ठीक है, some youths they took a drug named nitrazepam. शायद फार्मेसी के स्टूडेंट से सुन रखा होगा nitrazepam. It is also called nitravate बोला जाता है. So 2 youths they were under the influence of nitravate and they murdered 4 people. इन्होंने राह चलते चलते 4 लोगों को चाकू मार के मौत के घाट उतार दिया. They were under the influence of this nitravate. अब क्यों क्या nobody know. तो एक्चुअली नाइट्रावेट जैसे बोलते हैं ना, सुपारी देने के भी काम आता है. दिस इज कॉल्ड, ये जो ड्रग है जिसका मैंने भी नाम दिया नाइट्रावेट, ऐसे कई और भी ड्रग्स हैं. ठीक है, ये तो वो ड्रग्स हैं व्हिच आई हैव एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग माय टेन्योर. नाइट्रावेट इज अ ड्रग, किसी को दे दिया जाए एंड 1-2 डोज में ही गेट्स सो एडिक्टेड, उसे थोड़ी सी पिल्स देके कहा दिया जाए कि भाई आप ये काम कर लो, ही जस्ट डू दैट फॉर यू. He will not apply his brain because his brain stops working. It comes under the influence of this substance. It stops working at its own. अपना खुद का वॉल्यूशन छोड़ देता है. So there are legal costs like aggression and violence आता ही है. Then there is arrest and imprisonment. ठीक है,
और मैं आपको बता दूं दैट अभी हम जिसकी बात कर रहे थे एनडीपीएस एक्ट की, सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रिंजेंट एक्ट existing in India. ठीक है, it is one of the stringent act. It views the drug offenses very seriously. I'm again telling you, like we have seen, हाँ, अभी जो मैं जैसे आपको बताता हूँ कि इवन पोजेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है, बेसिकली हम ये क्या होते हैं हम इसमें आएंगे। बेसिकली ये कि अगर ड्रग्स छोटी मात्रा में भी पाई जाती है आपके पास, ठीक है, इवन इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं उसमें ट्रेड नहीं कर रहा था, आई वाज नॉट डूइंग एनी इलीगल ट्रेड, आई हैड केप्ट इट फॉर माय ओन पोजीशन ओनली, इवन दैट कैरीज अ ग्रेट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। अदरवाइज इलिसिट मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज, ट्रैफिकिंग, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, पोजेशन, every activity which you can imagine in respect of drugs is a crime and it is punishable and the quantum of punishment is too high. कितना हाई? ठीक है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट? क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इज, मैं आपको बताता हूं, हेरोइन की बात करते हैं। हेरोइन में जैसे इसमें क्या है, जो पनिशमेंट है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, दैट इज लिंक्ड टू क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हेरोइन की बात करते हैं तो हेरोइन में 250 ग्राम से, अगर 250 ग्राम से उससे ज्यादा हेरोइन के साथ कोई बंदा पकड़ाया जाता है या कोई बंदा उससे लिंक पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं कि जिसके पास से मिली सिर्फ वही पनिशमेंट पाएगा, ठीक है। अ पर्सन मे बी सिटिंग, जैसे सपोज द ड्रग may have been recovered at Ahmedabad, but if a person sitting at Bhopal or Jaipur, if he is found to be indulged somehow, so the quantum of punishment is 10 years, which may go up to 10 to 20 years or even more. 10 साल से 20 साल तक की सजा है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, कोर्ट उससे ज्यादा सजा भी दे सकते हैं, ठीक है। Accompanied by fine of rupees 1 lakhs to 2 lakhs or even more. 250 ग्राम हेरोइन के लिए 10 साल के लिए एक आदमी जेल जाएगा, 10 साल या उससे ऊपर, या 20 साल के लिए भी हो सकती है, ठीक है, कोर्ट उससे ऊपर भी जाना चाहे तो दे सकते हैं। ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है ड्रग्स में। अभी जनरली हमने कई कैरियर्स को पकड़ा, जनरली क्या होता है, जो किंग पिन्स होते हैं, जो मतलब जिन्हें हम कहते हैं जो बड़े डॉन्स हैं, ठीक है, वो कहीं पिक्चर में जाते हैं, उनको मालूम है, दे नो दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट एक्ट, दे नो दैट दे हैव टू कंसील देमसेल्व्स, सो फॉर दिस वेरी पर्पस व्हाट दे डू, दे एम्प्लॉय कैरियर्स। कैरियर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग कि उनको थोड़े बहुत पैसे दे दिए, उसके लिए वो काम कर जाते हैं, ठीक है। कॉलेज में है भाई, तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिल रही है, यू वांट टू हैव, आपको बाइक चाहिए, आपको ये चाहिए, ठीक है, काम कर दो, इसको बस यहाँ से वहां पहुंचा दो, ठीक है, इसको केवल अहमदाबाद से सूरत पहुंचा दो, इसको, ये आपका कैश पड़ा है यहाँ पे 30,000 ले लेना बात। वो बंदा ये नहीं जानता है कि अगर बीच में उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया तो ही बी बिहाइंड बार्स फॉर नॉट लेस देन 10 इयर्स, ठीक है, 10 साल, कम से कम 10 साल, ठीक है, 20 साल तक भी जो हो सकती है। सो आप देखेंगे कि उसने जीवन, ही हैज सिंपली स्पॉइल्ड हिज लाइफ। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम से, इसके द्वारा हम आपको ये बताएं कि मतलब आप में इसके बारे में जागरूकता बने कि ये जो चीजें हैं ये करने से, ड्रग्स से बिल्कुल आप दूर रहें, ठीक है, बिकॉज दिस एक्ट इट व्यूज द ड्रग ऑफेंसेस वेरी सीरियसली, ठीक है। फिर हम देख रहे थे, ये तो हमने बात की भाई लीगल कॉस्ट क्या है, और लीगल कॉस्ट के अंदर हमने एनडीपीएस एक्ट के बारे में देखा, हमने देखा कि इट इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट एक्ट एंड इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ, इफ अ पर्सन इज फाउंड इन पोजेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज, he'll land up in jail, और जो जेल होती है that is rigorous imprisonment, it is not simple imprisonment, it is rigorous imprisonment. So health cost में there are some diseases which are directly related to drug abuse, जैसे HIV है, hepatitis B है and C, and tuberculosis है, so the person abusing drugs, he has a high risk of catching these diseases. Sir, any problem? Amit sir? Amit sir? Session is over. Hello?
Sir, you are not audible. Amit sir, you are not audible. Okay, sir, please speak up. Okay. There was some network issue right now. Fine, fine, sir. It's okay. So just as I told you, just we were discussing that drug abuse carries a great deal of health costs. There are certain diseases which are directly linked to drug abuse. Then there is infertility, miscarriage, and stillbirth. Okay. These are some of the potentials, the dangers of drug abuse. There are psychosomatic disorders. A person has reduced immunity levels. और ये जो बातें हैं, ठीक है? A person taking even a person who is addicted to drugs, ultimately he falls into these disorders. He cataracts these disorders. Then there are sexually transmitted diseases and unprotected sex is there. Fine. Because ये जो injections जो होते हैं needles, ठीक है? And then as I told you, the person loses his perception, he loses control over himself, his CNS system that ceases to work at its own volition. Economic costs are there. Okay. Then psychological cost, I don't need to stress much. This is very much self-understood that there are low self-esteem, then fear of abandonment. And there is one very unfortunate thing, that is suicides. Okay. So who gains in this race? Ultimately, the drug traffickers, the cartels, the peddlers, the persons who are engaged in flesh trade. So ultimately, these are the persons who gain from this drug trade. A person who is an abuser, who consumes them, he is the only loser. His family is a loser. Okay. The families are a very pathetic situation. So अब जो उद्देश्य है हमारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, थिंग इज दैट व्हाट वी कैन डू. ठीक है. द थिंग इज दैट वी नीड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. ठीक है. जो अब यही बात है कि ड्रग्स लेकर जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती है. मैं फिर से वही बता रहा हूँ, ड्रग्स डोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम. दे इनफैक्ट they only make your problem more cumbersome, more complicated. Fine. So you must understand one thing: always resist peer pressure. Always say no to drugs. And wrong is wrong even if everyone is doing it. आपका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर सब लोग ड्रग्स ले रहे हैं, still if something is wrong, it is wrong. And right is right even if no one is doing it. जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. ठीक है. तो ये बिल्कुल आपको समझना है इस चीज को. And ultimately, I know the point which I have been able to put across the table is that drugs are not at all cool. Fine. अभी एक जो important aspect है जो हम इसका देखेंगे, especially girls, they should be cautious about date rape drugs. ठीक है. Some drugs like rohypnol and we have flunitrazepam, जिसे rohypnol बोलते हैं. We have ketamine. Then there are something called GHBs, gamma hydroxybutyrates. ठीक है. These are the drugs which are called date rape drugs. ठीक है. So especially the girl students जो भी यहाँ पे हैं, तो थोड़ा ध्यान लगा के इसको सुन लें, because you have to be more cautious. थोड़ा सा हम इनके बारे में देखेंगे. What are date rape drugs? Fine. These are the drugs which are used to incapacitate someone for the purpose of committing a crime. इन ड्रग्स की जो टेंडेंसी होती है वो ये रहती है कि they are also called forget me drugs. So अभी हमने सबसे पहले जब हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, तो we have seen, I had cited some examples where the women or the girls were sexually assaulted. And thereafter, after passage of some quantum of time, they were not able to recall what happened with them. उनको मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ उनके साथ. जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया तो ये भी नहीं पाया गया कि उनको ड्रग किया गया है. So what happened exactly? तो ये जो ड्रग्स होते हैं which are called predatory drugs or date rape drugs, they have a उनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, they are orderless and colorless. And they can be easily slipped into someone's drink. ठीक है. पिल्स आती है, जैसे हमने बात की थी अभी फ्लूनाइट्राजेपाम की, रोहिपनॉल. Actually, that is the most commonly used date rape drug. जो रोहिपनॉल है, रोहिपनॉल comes in the form of tablets. White tablets होती हैं. Even if that is mixed in water, ठीक है. पानी में भी चेंज का जो पानी का जो टेस्ट बहुत ज्यादा परसेप्शन चेंज नहीं होगा इसका. ठीक है. अच्छा, इनको अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलाया जाए तो कोई टेस्ट चेंज के बारे में बोल ही नहीं सकता है. That there has been any significant, that there has been change in taste. Okay. The thing is that they weaken the victim, so they are unable to resist or fight back. Or the victim is unable to remember what happened.
ठीक है. So she is not able to recall what happened with her. She was sexually assaulted, but she is not able to recall what happened with her. ठीक है. तो जो विटनेस होता है जनरली इन केसेस में, when there is a sexual assault, तो लॉ एनफोर्समेंट सबसे पहले उसका बयान लेती है, एंड हर जो बयान देती है वो, ठीक है, सो उसका जो दैट कैरीज अ ग्रेट डील ऑफ वेट. ठीक है, उसका काफी वेट होता है. देन टेस्ट करा जाता है, मेडिकल टेस्ट करा जाता है. बट ये जो सब्सटेंसेस है, ठीक है, दे गेट फ्लश्ड आउट ऑफ द सिस्टम वेरी क्विकली. 8 से 12 घंटे के अंदर ये सिस्टम से फ्लश आउट हो जाते हैं. जैसे अगर जीएचबी की बात की जाए, गामा हाइड्रोब्यूटरेट्स, ठीक है, इवन अगर रोहिग्नॉल की बात की जाए, तो ये फर्स्टली जैसे मान लो यूरिन हुआ तो दे गेट फ्लश्ड आउट ऑफ द सिस्टम. तो मेडिकल टेस्ट में भी नहीं आएंगे ये. सो ना तो किसने ड्रग किया है, वो ये नहीं बता पा रही हुआ क्या. ठीक है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच द कल्प्रिट फॉर द लॉ एनफोर्समेंट. So these are the generally used day trip drugs. We have benzodiazepines, ठीक है, जिसके अंदर रोहिग्नॉल है, अल्प्राजोलम है, क्लोनाजेपाम है. जनरली रोहिग्नॉल इज, जैसा as I we discussed, रोहिग्नॉल इज generally misused for this purpose. उसके अलावा केटामाइन है. केटामाइन was introduced in NDPS Act as recently as 2011. 2011 में इसको NDPS Act में इंट्रोड्यूस किया गया था. बेसिकली दिस इज ऑल्सो एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर की यूज में रूप में काम करता था. और जो वेटरनरी डॉक्टर थे ये यूज करते थे कैटल को इंजेक्शन देने में. ठीक है, जब उनका कोई ऑपरेशन किया जाता था तो कैटल को इंजेक्शन दिया जाता था, इवन आदमियों को दिया जाता था. बट उसका अब्यूज इतना ज्यादा होने लगा कि दैट वाज इंक्लूडेड इन द एनडीपीएस एक्ट इन 2011. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड जीएचबीज, गामा हाइड्रोक्सीब्यूटरिक एसिड. दिस इज अनदर predatory drug. So the point which I am trying to put across the table is awareness. You need to be aware, especially the girl students. So what is the way out? So these are some of the measures, countermeasures, which you can take to protect yourself from undesired, I will say, activities, undesired moments. Like pour your own drink. खुद से containers खोलिए. Keep control of your drink at all times. Don't take anything that tastes strange. ठीक है, and stick with the friend. And if you feel anything absurd or odd, fine, ask your friends for the help. So this is something which I think you would not have known beforehand. You need to know. So now, what teachers or pedagogues need to do? You have to check vendors and hawkers around the college. कॉलेज के आसपास कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, कोई लगता है कि बंदा कुछ बेच रहा है, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई वो चाय के साथ या जूस के साथ कुछ सस्पिशियस सब्सटेंस बेच रहा है, तो डू हैव अ चेक अराउंड देयर. ठीक है, और अगर आपको लगता है समथिंग इज सस्पिशियस, डू इन्फॉर्म द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन योर वाइसिनिटी. ठीक है, उसके अलावा हैव रैंडम चेक्स इन हॉस्टल रूम्स. जनरली जो बच्चे हैं दे कीप देम कंसील्ड इन द हॉस्टल रूम्स इन देयर पोजीशन, तो हैव रैंडम चेक्स इन हॉस्टल रूम्स. Then if you see someone is snorting it or injecting it, so you can immediately take action, suitable action. You can immediately inform it to the nearest law enforcement agency, and then corrective measures can be taken instantaneously. Then ये जो dissemination of information on drugs, जैसे ये जो information आपको दी जा रही है, आप जब ये ऐसे programs conduct करेंगे, you can disseminate this information further so that there is a great level of awareness among the students, and so this problem can be addressed. Then you can organize events periodically to keep campaign against drug abuse. जैसे यहाँ पे अहमदाबाद में there is something called healthy campus. So कई colleges से जुड़े हुए हैं healthy campus से. So they are organizing these events on a regular note. And then NDPS Act की बात कर रहे थे. As I told you, this act views drug offences very seriously, and the penalties are quite stiff. The quantum of penalties is quite stiff, and of course the fine varies with the quantity of drugs. जैसे हमने हेरोइन की बात की थी, ओपियम के बारे में 2.5 केजीज है, 2.5 केजी या उससे ज्यादा मिल जाए तो 10 साल से 20 साल की सजा है. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कम मिले तो कुछ नहीं है. हेरोइन में अगर 5 ग्राम्स हेरोइन मिलती है, 5 ग्राम्स, ठीक है, दैट कैन लैंड यू इन जेल फॉर अप टू 1 ईयर. 1 साल तक आपको जेल होगी, 20,000 रुपए तक का फाइन होगा. ये 5 ग्राम या उससे कम में, 5 ग्राम तक अगर आपके पास पाया जाता है हेरोइन, 5 ग्राम तक, ठीक है, यानी कितनी भी छोटी सी क्वांटिटी हो उससे 5 ग्राम तक पाया जाता है, आप 1 साल के लिए जेल जाएंगे और 20,000 रुपए तक का फाइन भरेंगे. 5 ग्राम से ऊपर पाया गया, 10 साल तक की सजा है आपको, जो कि रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है. ठीक है, और अप टू 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है आपके पास, आपके ऊपर. और हमने बात की कि अगर 250 ग्राम या उससे ज्यादा पाया गया तो 10 साल तक की सजा, 1 से 2 लाख रुपए तक का फाइन.
उसके अलावा भी कई है, जैसे इवन आपका जो घर है, मकान है, दैट कैन बी फॉरफिटेड। और ये पाया जाता है कि आपने ड्रग मनी से ही बाइक खरीदी है, ड्रग मनी से ही कार खरीदी है, ठीक है, सो दे आर लायबल टू बी फॉरफिटेड। सो दिस इज द स्ट्रिंजेंसी ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, हमने ये भी बात की कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसके पास से पाया गया सिर्फ वही जेल में जाएगा, ठीक है। मान लो किसी बंदे ने जयपुर से किसी बंदे को देके भेजा, कहा कि यार तो उसको जाके अहमदाबाद में पीना या अहमदाबाद में किसी आदमी को देना, तो वो जो जयपुर वाला जो बंदा है, he will also face similar consequences which this person in Ahmedabad has faced। उसको भी 10 साल की जेल होगी अगर 250 ग्राम इसके पास पाया गया तो। इसने बताया कि सर ये मुझे जयपुर में रहने वाले XYZ ने दिया है, और इंदौर में जो रहता था ABC, उसने इसके लिए पैसा उसने दिया था, ठीक है, और मुझे उसने अपने घर में रुकवाया था एक दिन के लिए जब मैं ड्रग लेके जा रहा था। तो जो इंदौर वाला बंदा है, जयपुर वाला बंदा है, अहमदाबाद वाला बंदा है, तीनों का जो क्वांटम रहेगा पनिशमेंट का वो सेम रहेगा। एंड वी हैव जस्ट सीन व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। गांजा में 1 किलो या उससे कम अगर मिलता है 1 साल तक की सजा है, 1 किलो या उससे ज्यादा मिले 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 10 साल 20 किलो से ज्यादा मिले किसी के पास, या किसी के पास ना भी मिले, कोई किसी भी तरह से उसमें संलिप्त पाया गया, if he is found to be involved in any way, fine, he can be put behind bars for a period not less than 10 years, extendable to 20 years. Now we will just have a look of some commonly abused drugs so that you get an iota of idea how drugs look. ये अफीम है, ठीक है, दिस इज अ टिपिकल ओपियम पॉपी प्लांट, ठीक है। फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, आप जानते होंगे, इट इज कॉल्ड पैपावरस सोमनिफरम, ठीक है, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम इज पैपावरम टोमिनस। ये आपका फील्ड है पॉपी का, ठीक है। इसमें चीरा लगाया जाता है, इट इज इंसिनरेटेड, ठीक है, इंसाइज्ड। इसको चीरा लगाया जाता है, जैसे आज इसका टाइम होता है चीरा लगाने का, देन 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले दिन इस तरह से जब चीरा लगाया जाता है, दिस व्हाइट सब्सटेंस ओजेस आउट ऑफ दिस बल्ब। ये जो गोल गोल है इसको बोलते हैं बल्ब, इसको हिंदी में डोडा बोलते हैं, ठीक है। जब चीरा लगाया जाता है डोडे पे, तो इस तरह का सफेद पदार्थ, दिस व्हाइट सब्सटेंस, इट ओजेस आउट, एंड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, इट टर्न्स ब्राउन लाइक दिस। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, ठीक है। So when it comes in contact with the air, it turns brown and then it is collected and it looks thus। जो ओपियम है ये इस तरह से दिखता है। Then we have, ये आपने जो नाम सुना होगा ब्राउन शुगर। अच्छा, ये क्या है, थोड़ी स्लाइड यहाँ पे, दिस इज ब्राउन शुगर विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिकन हीरोइन, ठीक है। एक्चुअली हीरोइन दो टाइप की होती है, जैसे मैंने बताया था, वी हैव 2 रीजन्स इन द वर्ल्ड। इसके अलावा जो लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, देयर आल्सो इट इज कल्टिवेटेड, ठीक है। तो वहां की जो हेरोइन है, दैट इज ब्राउन इन कलर, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड ब्राउन शुगर, अभी भी इसको ब्राउन शुगर कहा जाता है। एक्चुअली इनिशियली 1960s और 70s में सबसे पहले वहां से शुगर मतलब स्मगल की जाती थी इंडिया में, फ्रॉम द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, सो दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड ब्राउन शुगर। बट बाद में फिर ये अमेरिका, पाकिस्तान, सॉरी ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, यहां से बैन लगी, एंड दैट हेरोइन इज कॉल्ड साउथ वेस्ट एशियन हेरोइन, इट इज व्हाइट इन कलर। अब ये जो गुजरात में जो हेरोइन आती है फ्रॉम पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान थ्रू द पोर्ट्स, ठीक है, जो कि पकड़ी जाती है या कुछ जो नहीं पकड़ी जाती है, जो एंटर कर जाती है, सो दैट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट एशियन हेरोइन, जो सफेद होती है रंग में, इट इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। इट लुक्स लाइक दिस। Just give me a second, I'm just bringing my charger. मेरा चार्जर ले आना मेरे। गांजा, गांजा देखते हैं कैसे है। ये गांजा का पौधा है, इसका फ्लोरिंग टॉप है, एनडीपीएस में इसका फ्लोरिंग टॉप इंक्लूड किया गया। अब गांजा और भांग के बीच में अंतर है। भांग जो है वो एनडीपीएस एक्ट में नहीं इंक्लूड की गई है। भांग जो है दैट इज द मेल प्लांट, गांजा इज द फीमेल प्लांट। So this is marijuana, it is also called marijuana। Then इसको सुखा के, हमने एनसीबी ने अभी तक जितने भी केसेस किए हैं गांजा के, marijuana के, उसको क्या करते हैं, सुखा के, इट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स
and then it is transported, smuggled. Then we have hashish. Every year, NCB Ahmedabad catches a good deal of hashish, and every time it is found that it has been sourced from Jammu and Kashmir. ये जम्मू एंड कश्मीर में कल्टीवेट की जाती है हशीश, ठीक है, एंड वहां से गुजरात में अलग अलग जगहों पे सप्लाई की जाती है. द थिंग इज दैट गुजरात, पहली बात तो ये है कि इट्स अ प्रॉस्परस स्टेट, ठीक है, पीपल हैव मनी टू अफोर्ड फॉर ड्रग्स. सेकेंडरी थिंग इज दैट लिक्वर बैन किया गया है. अब क्योंकि लिक्वर प्रोहिबिटेड है, तो जो लोग पहले लिक्वर लेके अपना काम चला लेते थे, दे गो फॉर ड्रग्स. तो ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पे. चलो लिक्वर बैन है, अच्छी बात है, बट देन, और लिक्वर में क्या है कि लिक्वर को छुपा के लाना, एक दो बॉटल आदमी किसी तरह से ला सकता है, बट ड्रग्स का क्या है कि जैसे बताया, इवन जो छोटी क्वांटिटी है ड्रग्स की, उसको भी अब्यूज किया जाता है और कहीं भी छुपा के इसको ला दिया जाता है. सो दैट पोजेस अ चैलेंज फॉर द लॉ एनफोर्समेंट. ये कोका का पौधा था, कोका लीफ था, ठीक है, इससे कोकेन बनती है. जस्ट अ सेकंड. So this is the coca plant. We have seen the coca leaf. इस तरह इसमें से गैदर किया जाता है पत्तों को, और पत्तों से बनती है कोकीन. This is the way cocaine is synthesized. Okay. There is a lapse in reflection at your end. Anyways, so cocaine, we have seen how cocaine looks. I mean, अभी तो हमने पत्ता देखा कोकेन का कैसे, कोका जो प्लांट होता है उसका पत्ता इस तरह से होता है और उससे कोकेन बनाई जाती है. कोकेन्स लुक लाइक दिस. अभी आपके एंड पे रिफ्लेक्ट होगी. There's a lag in network due to which instantaneously slides वहां रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है आपके एंड पे. Anyways, I think due to some network issues, the PPT, the slides are not getting reflected at your end instantaneously. There is a lapse. There is a great deal of lapse. कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यू कैन कंटिन्यू सर. we are able to hear you, and it is more than enough sir. Actually much more informative lecture sir. Right. तो the thing is that, ठीक है, ये LSD टैबलेट है जो हमने अभी देखा. So now I hope that after this presentation, after this discussion, the audience would have definitely got a fairly good idea about the hazards which drug abuse pose upon the individual, upon the society, and upon the nation at large. And I'm very much optimistic that you will be disseminating this information among your peers, to other people who come into your contact, and will make them aware. So with this, I will culminate my presentation here, and if any audience has any doubts or any apprehensions, he can just raise it here. If audience have any kind of doubt, they can ask a question. Also, they can write in their chat box. Okay, no question at all. Thanks a lot, sir, for such a wonderful session filled with so much knowledge and understanding. I am sure that
Participants will be enriched with full of knowledge and awareness about the drug abuse. Thank you so much, sir. Our second session on NDPS Act and rules and regulation will start at 1 p.m. sharp after a lunch break, and attendance link and the feedback form will be posted in your chat box right now. Thank you. So everybody can able to left and join the second session at 1 p.m. sharp. Thank you, sir.
Fine, sir. Please speak up. आवाज आ रही है उनकी? Actually, in our office, CCTV cameras have been installed, so there's some intermittent power outage here. Yes, sir. Okay, by the way, am I audible to the audience? Yes, sir. Absolutely audible, sir. Okay, thank you. Yeah, for some 2 or 3 minutes, you have to bear with this darkness because it is something that is inescapable. No, sir. Sufficient light will be there. Not an issue, sir. No, it's okay, sir. Please cover the curtain. Okay, fine. Fine, sir. So audience अभी यहाँ पे आ गए हैं और people are still to come. No, sir. They are starting to join. Already 53 members have been joined. We will wait for 2 minutes and then we will start. Not an issue, sir. Okay, fine. Till that, you can share your slides, sir. We can check it out whether it will be visible or not.
You can share your slides. Fine. Yeah. Fine. That we can practice more. Shares won't be slide because actually they are on the office computer and there's a power outage here. It suddenly occurred. Power outage. Okay, not an issue, sir. Okay, fine. We have to just bear for a minute or two. No, not an issue. ठीक है अपने ऑडियंस आ गए क्या? Have the audience joined? All have Yes, joined? sir. Yes, sir. They are already joined. So we can start. हाँ, we can start now. Okay. और जैसे पावर वापस आ जाएगा, once the power is restored, we can then do the slides also. उसके पहले, है ना? उसके पहले I would like to give a brief introduction about this presentation. We'll be wading through. It is about the RCS Order 2013. कितना टाइम लगेगा? This is about Regulation of Controlled Substances Order 2013, and I learned that the pharmacy students, they have this RCS order in the syllabus. NDPS order 1985 और RCS order 2013 ये आपके syllabus में है, right? So चलो आपका वो भी हो जाएगा, revision भी हो जाएगा, and since you are the future. Welcome all of the participants once again on the second session of NDPS Act Rules and Regulations organized by Sri Swaminarayan Sanskar Pharmacy College Zundal. Now, without wasting a second, I would request Sri Amit Khare sir to start a session. Some technical error was there. So, please continue, sir. Okay. So, Regulation of Controlled Substances Order 2013. This is a part of the NDPS Act 1985. Earlier, there was a RCS Order 1993. Earlier, the RCS Order, it was actually formulated in 1993. Thereafter, in 2013, the earlier order, that is RCS Order 1993, was annulled. It was repealed, and RCS Order 2013, it came into existence. So basically, controlled substance होता क्या है? ठीक है, ये वही है जिनको हम प्रिकर्सर केमिकल्स बोलते हैं. तो ये प्रिकर्सर केमिकल्स क्या चीज है? अब हमने जब अपने पहले सेशन में देखा था कि हमने पहले सेशन में एक चीज तो बिल्कुल अप्रिशिएट की होगी कि जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं या जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, उनकी ग्रे मार्केट में एक ह्यूज प्राइस है. ठीक है, दे हैव ए ह्यूज प्राइस. हमने ओपीएम का केस देखा था कि ओपीएम की जो गवर्नमेंट प्राइस है दैट इज समवेयर नियर 1800, और जो जैसे ये मार्केट में आता है ग्रे मार्केट में, इट इज प्राइस्ड एट 1.5 lakhs per kg. हेरोइन के केस में और मेथाम्फेटामिन के केस में हमने देखा कि द प्राइस गोज इन क्रोर्स पर केजी, एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स. ज्यादातर जो ड्रग है उनमें क्या है, जो उनकी प्रिपरेशन कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स इज वेरी वेरी लो कंपेयर्ड टू देयर प्राइस इन द ब्लैक मार्केट. अब प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है? बिकॉज दे आर प्रोहिबिटेड और कंट्रोल्ड, और द अवेलेबल देयर इज इशू विद द अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी एक इशू है क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट है उस पे, और लेजिस्लेचर में ड्रग्स है, तो
आराम से मिलेगी नहीं, बहुत चोरी छुपे कहीं से जुगाड़ करनी पड़ती है ड्रग्स की, और पकड़ लिया जाए तो एक बहुत स्ट्रिक्ट एनडीपीएस एक्ट है अपने यहाँ, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स के चलते इनका जो प्राइस है ये बहुत ज्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम दिस आर द ड्रग्स विच आर हाईली एडिक्टिव, ये ड्रग्स बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। और अभी एक चीज और जो हमने शायद डिस्कस करना अपना मिस हो गया था, कि जैसे हमने देखा था कि हेरोइन का जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में, दैट इज प्राइस्ड अबाउट 10 to 15 करोड़ पर केजी, ठीक है, या उससे ज्यादा भी है डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। अब इवन अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखा जाए तो हमने देखा था कि जहां इनका प्रोडक्शन एरिया है, वेयर इट इज इलिसिटली प्रोड्यूस्ड, इवन देयर द प्राइस ऑफ हेरोइन इज अबाउट 50 lakhs पर केजी। अब अगर पुड़िया में भी बेचना है तो 50 lakhs के हिसाब से अगर मान लो 100 ग्राम की पुड़िया भी बनती है, ठीक है, 100 ग्राम तो चलो मैंने बहुत बोल दिया, 1 ग्राम या 10 ग्राम की पुड़िया बनती है, तो उसमें भी बहुत हैवी प्राइस होगी, एंड नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट प्राइस। सो व्हाट दिस गाइज डू, व्हाट दिस बैड गाइज डू, दे मिक्स इट विद अदर एडल्ट्रेंट्स, दे एडल्टरेट इट, उसमें ऐसी कुछ चीजें मिक्स कर दी जाती हैं जिससे कि जो इफेक्ट है, लोग ड्रग्स लेते हैं वो इफेक्ट के लिए, वो किक के लिए, तो वो जो किक है वो लगभग लगभग बनी रहे, लेकिन प्राइस में कम हो जाए, प्राइस में मतलब कमी आ जाए, इसके लिए इसे मिक्स करते हैं एडल्ट्रेंट्स, ठीक है। अब जैसे एल्प्राजोलम है अपना, डाइजापाम है, लोराजेपाम है, देयर आर एन नंबर ऑफ एडल्ट्रेंट्स। लेकिन अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं दे आर साइकोट्रोपिक, दे आर सॉरी प्रिकर्सर केमिकल्स। अब प्रिकर्सर केमिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, आपने एक फ्रेज अंग्रेजी में है, इंग्लिश में एक फ्रेज है विच इज अ वेरी कॉमनली नोन फ्रेज, आपने शायद कई बार सुना भी होगा, दैट हार्ड वर्क इज द प्रिकर्सर टू सक्सेस। हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस मिलेगी आपको, तो प्रिकर्सर मतलब जिसके द्वारा आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंचते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो प्रिकर्सर केमिकल्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर आइदर नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। दे आर नॉट अब्यूज्ड एज सच, उनको अपने आप में अब्यूज नहीं किया जाता, बट दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। वी हैव सीन द इलस्ट्रेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, हमने देखा था कि एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज करके अफीम से हेरोइन सिंथेसिस की जाती है, ठीक है। उसमें जो स्टेजेस होते हैं, इट इज लाइक ओपियम, फ्रॉम ओपियम द फर्स्ट स्टेज इज मॉर्फिन, हेरोइन बेस एंड हेरोइन, इस तरह से अफीम से हेरोइन बनाई जाती है। अफीम की जो प्राइस है हमने देखा था ब्लैक मार्केट में, इट इज अबाउट 1.5 lakhs पर केजी। हेरोइन आते से ही, हेरोइन बनते से ही प्राइस बिल्कुल रॉकेट अप हो जाती है, इट शूट्स अप टू crores of rupees per kg. So that is what prompts the bad guys to go for drug trafficking, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स है जिनका प्रयोग करके आप नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनको बोलते हैं प्रिकर्सर केमिकल्स। और प्रिकर्सर केमिकल्स को भारत सरकार ने कंट्रोल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। मतलब दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर कंट्रोल्ड, दे आर नॉट प्रोहिबिटेड। देखिए फर्क समझिए, हेरोइन जो है, हेरोइन का कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, कोई फार्मास्यूटिकल यूज नहीं है, जहां देखा जाए उसे कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डायरेक्टली सीज कर लेगी, और जो भी कार्रवाई है, जो भी अनुचित कार्रवाई होगी, जो भी मतलब एक्शन बनेगा वो करेगी, ठीक है। हेरोइन किसके पास से भी मिलती है, द पर्सन विल बी अरेस्टेड। सेम इज द केस विद कोकेन, कोकेन का कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, कोई फार्मास्यूटिकल यूज नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई उसका यूज रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जहां भी मिलेगी सीधा पकड़ना है, उस आदमी को अरेस्ट करना है और आगे की कार्रवाई करनी है। सेम इज द केस विद गांजा, हशीश, ठीक है। ओपीएम भी जो है, ओपीएम भी गवर्नमेंट अपने रेगुलेशन में रखती है, तो ऐसे नहीं कि किसी आदमी को ये पावर नहीं दी गई है कि ओपीएम या जो ओपीएम के जो वो है डेरिवेटिव्स हैं, ये गवर्नमेंट तय करती है। जो कोडीन का कोटा है हर साल किसी एक कंपनी को दिया जाता है, किसी एक कंपनी को, जैसे पहले एनसीपीएल को दिया था, एनपीसीएल निकोलस पिरामल लिमिटेड, उसके बाद एएचपीएल को दिया था, अबाउट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। सो ये हर साल जो किस कंपनी को देना है, ये कोटा गवर्नमेंट हर साल डिसाइड करती है, ये किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, ठीक है। मतलब ओपीएम या ओपीएम के जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, वो कोई इंडिविजुअल अपने पास नहीं रख सकता। ये जो अपना नीमच में गवर्नमेंट ओपीएम एंड एल्कोलाइड वर्क्स है, जो फैक्ट्री है, वहां पे ओपीएम से डेरिवेटिव्स उसके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, एंड देन दे आर पुश्ड इन द मार्केट एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल हैज नो से इन आइदर प्रोडक्शन और डेरिवेशन ऑफ ओपीएम डेरिवेटिव्स। यहां साइन कर दो हर पेज पे, just a second. Okay, so now the power is also restored back, and now we can definitely. Sir, you can share your slides on my WhatsApp so that I can share it from here. No, actually the power is restored back, so now I can just start my slides on my laptop only. Okay, fine, sir. Power just restored back. It just restored. Okay.
Okay, so now we'll be starting the presentation. I hope the concept of precursor chemicals or the control chemical is very much clear to the audience. Okay, so now start with the PPT. अब ये जो प्रिकर्सर केमिकल्स थे, इन प्रिकर्सर केमिकल्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आरसीएस ऑर्डर सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था 1993 में, जिसको 2013 में फिर से पहले वाले को एन्यूल कर दिया गया, पूरी तरह से रिपील कर दिया गया, और 2013 में न्यू आरसीएस ऑर्डर, दैट इज रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस ऑर्डर 2013 वाज फॉर्मुलेटेड. So is the screen visible to all? No, sir. You just have to share a slide. Of course, I have shared the slide. I think it will take some quantum of time before it is reflected at your end. आपके end पे थोड़ा सा टाइम लगेगा because वो जो lag है ना, network lag is there. Okay, fine. Yeah, okay, fine, sir. It is visible. Okay, it's visible now. Fine. So हमने देखा प्रिकर्सर केमिकल्स के बारे में. अब आप लोग जो भविष्य के मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप लोग कई केमिकल सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर करेंगे, आप लोग कई ऐसे सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर करेंगे जो कि एनडीपीएस एक्ट या आरसीएस ऑर्डर की श्रेणी में आएंगे. ठीक है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एस्पेक्ट. अब जैसे अगर आपको पता है कि ये प्रिकर्सर केमिकल है, तो इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल्स बनाए हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको अगर वायलेशन होगा तो मतलब इसमें पेनलाइजेशन होगा, पनिशमेंट मिलेगी. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आई विल साइट अ केस. हमने जैसे अभी रिसेंटली कई बार क्या होता है, कोई इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ सर्टेन provisions of NDPS Act or RCS order. So in that case, it becomes very difficult. In that case, बाद में क्या है, मैंने बताया कि RCS order on this NDPS Act is a very stringent act. ठीक है, अब बाद में अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात है, अभी हम जब एक्ट के अंदर आएंगे, the burden is upon the accused. The burden to prove that the person is innocent is upon the accused only. ठीक है, accused को प्रूव करना पड़ता है कि मैं निर्दोष हूं. अब ऐसे में क्या है कि बेहतर है अगर आप ये इसके जो प्रोविजन है पहले से जान ले. ठीक है, और आपके लिए काफी आसानी होगी क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कोई चीजें करनी चाहिए तो किस वे में करनी चाहिए. अभी रिसेंटली ये केस हुआ था एनपीपी. एनपीपी इज यूज्ड एज अ प्रिकर्सर केमिकल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फैंटानिल. ठीक है, तो उसमें भाई द फर्म इज फेसिंग सम इश्यूज. मे बी इट वाज नॉट अवेयर. अब जाना है अनजाना है, जानबूझ के हुई है अनजाने में हुई है, वो तो बाद में फिर अब कोर्ट के सामने प्रूव करने का मैटर आएगा तो बहुत दिक्कत होगी. तो क्यों ना हम प्रीएम्प्टिव स्टेप्स ले लें. अगर आपके पास पहले से नॉलेज है, सो यू विल नॉट लैंड इनटू एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल इन दैट केस. फाइन. सो हम अभी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, अभी हमने देखा है कि सिर्फ अगर गांजा को छोड़ दिया जाए, अफीम को छोड़ दिया जाए, चरस को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उनके अलावा जितने भी ड्रग्स हैं, दे आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, दे आर सिंथेटिक ड्रग्स. इनको बोलते हैं सिंथेटिक. अब सिंथेटिक में क्या है, आइदर दे आर सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक. सेमी सिंथेटिक जैसे मान लो हमने अफीम से मॉर्फिन बनाई. ठीक है, सो मॉर्फिन इज द फर्स्ट स्टेज फ्रॉम द नेचुरल. अफीम, ओपियम इज अ नेचुरल ड्रग. ठीक है, देन इट इज रिएक्टेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड देन दिस heroin or brown sugar, what do you call it, heroin is manufactured, it is synthesized. So heroin is a semi this morphine is a semi synthetic drug, heroin is a synthetic drug. बट हाँ, हम जब लॉ की बात करते हैं तो ये जो हमारा एक्ट है, ये सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक ड्रग्स को एक ही तरह से मतलब ट्रीट करता है. नेचुरल, तो हम बस दो टाइप के ड्रग्स में बात करेंगे, नेचुरल और सिंथेटिक. सो सिंथेटिक में सेमी सिंथेटिक भी आ गया. ठीक है, तो अब किसी भी ड्रग को, किसी भी ड्रग से, ठीक है, या किसी भी चीज से अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो हमने कहा कि प्रिकर्सर केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसको हम कंट्रोल सब्सटेंस भी बोलते हैं. बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके मन में चीज बिल्कुल बैठे. उसके लिए वी रिक्वायर दिस प्रिकर्सर्स. ठीक है, अब क्योंकि प्रिकर्सर्स हैव अ पोटेंशियल टू बी डाइवर्टेड टू द इलिसिट सेक्टर और द इलिसिट मार्केट, दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
but at the same time they have extensive pharmaceutical and industrial use also. अगर एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, उसका डाइंग, जो डाई इंडस्ट्री है उसमें इसका एक्सटेंसिव यूज है, मतलब बहुत धड़ल्ले से यूज होता है डाइंग इंडस्ट्री में। सिमिलरली आपके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्यूए क्यूसी के लिए फॉर क्वालिटी एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल एसिटिक एनहाइड्राइड इज वेरी रैम्पेंटली यूज्ड, और उसका कोई बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट हो ये भी तो अभी तक आया नहीं है। सो दैट्स व्हाई इंडस्ट्री को भी दिक्कत ना हो और ये सब्सटेंसेस डाइवर्टेड भी ना हो ग्रे मार्केट में, इसके लिए दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, वी विल बी सीइंग हियर इन आफ्टर, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं इसके ऊपर, आपकी स्लाइड पे आप देख पा रहे हो कि अच्छा द स्लाइड इज नॉट फास्ट। एनीवेज मैं आपको बताता हूँ, हमने जैसे बात की थी मिथाम्फेटामाइन की, हमने हेरोइन के बारे में समझ लिया, मिथाम्फेटामाइन की बात की। आपने कोल्ड कफ एंड कोल्ड टैबलेट्स में, अब जो बंदे फार्मेसी के हैं उनको तो मालूम ही होगा, जो फार्मेसी के नहीं है उन्होंने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप कफ एंड कोल्ड के लिए टैबलेट्स लेते हैं तो टैबलेट्स में एफेड्रिन या सूडोएफेड्रिन यूज किया जाता है। आप अगर कभी टैबलेट का कॉम्पोजिशन देखोगे तो मोस्ट ऑफन यू विल एनकाउंटर दैट इट कंटेन्स एफेड्रिन और सूडोएफेड्रिन, ठीक है। तो ये एफेड्रिन सूडोएफेड्रिन इज यूज्ड इन कोल्ड एंड कफ टैबलेट्स, लेकिन ऑन द डार्क साइड दिस एफेड्रिन एंड सूडोएफेड्रिन इज आल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर इलिसिट ड्रग्स, जैसे कि आपका हो गया एमडीएमए यानी कि मिथाम्फेटामाइन हो गया, उसके मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यू विल अंडरस्टैंड जनरली क्या किया जाता है। ये जो कफ एंड कोल्ड टैबलेट्स हैं जो आपको दुकान पे मिलनी चाहिए, ये किसी तरह से मान लो कोई इलिसिट फैक्ट्री इलिसिट काम कर रही है या कहीं इलिसिट बन रही है, ठीक है, या चलो इलिसिट नहीं भी बन रही है, ठीक है, रॉ मटेरियल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया हुआ है, एफेड्रिन सूडोएफेड्रिन एसिटिक एनहाइड्राइड जितने भी कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं, किसी को इतने आराम से रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं। अब क्या टैबलेट्स तो मिल गई, टैबलेट्स तो ओवर द काउंटर अवेलेबल है, किसी भी दुकान पे जाओ और डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ ले लो। कई दुकानें ऐसी भी चलती हैं जिनमें डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन दिए बगैर भी दे देती हैं वो, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा रेट लेंगे आपसे, जहां एक टैबलेट 1 रुपए की आ रही है आपको बोलेंगे हमें एक टैबलेट 20 रुपए में देंगे। चलो किसी तरह टैबलेट्स का जुगाड़ हो गया, टैबलेट्स तो मिल गई आपको क्योंकि ये तो किसी भी फार्मेसी शॉप में मिल जाती है। अब ये टैबलेट्स को क्या किया जाता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग, इसमें से एफेड्रिन सूडोएफेड्रिन एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर रॉ मटेरियल आपको अगर मेथाम्फेटामाइन मैन्युफैक्चर करना है, सिंथेसाइज करना है, so you need ephedrine or pseudoephedrine in its raw form. So it is synthesized from the tablets by through reverse engineering, and then it is used to manufacture this illicit drugs like methamphetamine. Okay. So this is the extent of desire of these drugs, which are called precursor chemicals. There is a network lag and again यहाँ पे पावर आउटेज हो गया, अनफॉर्चुनेटली आज ये काम हमारे ऑफिस में रहता। एनीवेज तो मैं आपको ये समझा रहा था कि प्रिकर्सर केमिकल्स के बारे में। सो ठीक है, अब देखिए, अब हमने चर्चा की थी कि प्रिकर्सर केमिकल्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड आरसीएस ऑर्डर, रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस ऑर्डर 2013, ठीक है। अब सबसे पहला जो इसमें जो प्रोविजन है ये क्या बोलता है, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी आज की डेट में 20 ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, देयर आर 20 केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर अंडर द लिस्ट ऑफ प्रिकर्सर केमिकल्स और कंट्रोल सब्सटेंसेस, means they are in RCS order 2013. So via RCS order 2013 these 20 chemicals are controlled. कंट्रोल किस तरह से रखा जाता है, देखिए सबसे पहली बात है कि किसी भी इंडस्ट्री को, ठीक है, इवन इंडस्ट्री नहीं, अगर किसी जो कैरियन फॉरवर्ड एजेंट होता है, सीएफए एजेंट, मान लो किसी को बिजनेस भी करना है इन केमिकल्स में, तो ही नीड टू हैव समथिंग कॉल्ड यूआरएन, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट इज इशूड बाय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, 20 केमिकल्स, 20 प्रिकर्सर केमिकल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किए गए हैं, उनको कंट्रोल सब्सटेंसेस कहा जाता है, जो आरसीएस ऑर्डर 2013 में है, ठीक है। इनमें से जो शुरू के 5 केमिकल्स हैं, अभी जैसे ही पावर आ जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट में, नहीं तो आप आरसीएस ऑर्डर अपना रिफर कर सकते हैं, यू कैन रिफर द आरसीएस ऑर्डर 2013, उसमें आपको टेबल मिलेगा। इन दैट टेबल आप देखेंगे कि देयर आर 20 केमिकल्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द आरसीएस ऑर्डर। इसमें आप देखेंगे देयर आर 3 शेड्यूल्स, आरसीएस ऑर्डर में 3 शेड्यूल है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ठीक है। ए में आपके जो सब्सटेंसेस हैं वो सिर्फ 5 सब्सटेंसेस हैं, कौन से हैं, सबसे पहला हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, एफेड्रिन, स्यूडोएफेड्रिन, एंथ्रेनिक एसिड एंड एन एसिटाइल एंथ्रेनिक एसिड।
एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि एसिटिक एनहाइड्राइड जो एसिटिक एनहाइड्राइड है दैट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हेरोइन फ्रॉम ओपियम। जो आपका एफेड्रिन और सूडोएफेड्रिन है, they both are used for illicit manufacture of methamphetamine. Again, methamphetamine ऐसा ड्रग है जिसका लीगल कोई यूज रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, इट इज कंप्लीटली इलीगल, उसको मैन्युफैक्चर करना भी इलीगल है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस सब कुछ इलीगल है, ठीक है। अब जो एफेड्रिन या सूडोएफेड्रिन इसको यूज करके मेथाम्फेटामाइन मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। अब अगर किसी बंदे को एफेड्रिन या सूडोएफेड्रिन में ट्रेड करना है, ट्रेड में क्या आता है, या कोई भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट करना है, अब ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन हो गए आपके मैन्युफैक्चर, परचेज, स्टोरेज, कंजम्पशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो आप इमेजिन कर सकते हो, बेसिकली सारी एक्टिविटीज कवर्ड है। कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन अगर किसी भी इंडिविजुअल या किसी कंपनी को लेना हो तो दे हैव टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो परमिशन कैसे लेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड यूआरएन, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको अप्लाई करना होता है। इसमें फॉर्म ए होता है, अगर आप आरसीएस ऑर्डर थोड़ा सा देखेंगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर्म ए में अप्लाई, फॉर्म बी में अप्लाई करना पड़ता है, और एनसीबी जो है वो फॉर्म ए में यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इश्यू करती है उस फर्म को या उस इंडिविजुअल को जो इसमें ट्रेड करना चाहता है या कोई भी एक्टिविटीज कैरी आउट करना चाहता है, ठीक है। दैट विल बी इशूड बाय एनसीबी। अब जैसे एनसीबी गुजरात में, अहमदाबाद में जो ऑफिस है उसका जो जुरिसडिक्शन है दैट इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड ड्यूटीज ऑफ दमन एंड दीव। तो दमन एंड दीव में अगर कोई कंपनी है जिसको इसमें यूज करना है या ट्रेड करना है या मैन्युफैक्चर करना है, कुछ भी एक्टिविटी करना है, इवन अपने पास रखना भी है कोई भी कंट्रोल सब्सटेंस, so they need to have a valid URN issued by Narcotics Control Bureau, that is my office। तो हमारे जो जोनल डायरेक्टर है he issues the unique registration number। उसके लिए पहले कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है, एक प्रोफॉर्मा है जो कि आपके आरसीएस ऑर्डर में दिया हुआ है, उसको बोलते हैं फॉर्म बी। फॉर्म बी में जब वो अप्लाई करता है एनसीबी को, then NCB issues a URN, that is unique registration number। Is my screen visible to the audience? It is visible? Yes, sir. Because yes, sir. my screen, laptop screen. No, laptop screen is not visible, sir. You are visible, but your PPT is not visible. Okay. देखते हैं पावर आउटेज है इस एरिया में, so let's see जैसे पावर आता है। तो the concept of precursor chemicals is clear to you, the concept of enforcement is clear to you, किस तरह से उसको कंट्रोल किया गया आरसीएस ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। अब जैसे आपने केमिकल का नाम सुना होगा, बहुत ही कॉमिकल है, दैट इज नेम पोटेशियम परमैंगनेट, या बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, KMNO4। कैन यू इमेजिन KMNO4 भी आरसीएस ऑर्डर के अंदर है, क्यों है, बिकॉज KMNO4 इज यूज्ड इन द इलिसिट मैन्युफैक्चर ऑफ कोकेन, HCl। कोकेन बनाने में KMNO4 का यूज होता है, मतलब उसके अंदर क्या है, कई केमिकल्स हैं, एक हो गया आपका एसीटोन, हो गया एसीटोन, इथाइल एथर, मिथाइल इथाइल कीटोन, MEK, देन यू हैव टोल्विन। अब क्या है, इन सब पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर दिया। अब जब इन सब पे कंट्रोल कर दिया तो गवर्नमेंट ने जो पिछला अपना ऑर्डर था आरसीएस ऑर्डर 1993, उसके थ्रू गवर्नमेंट इन पे कंट्रोल किया था कुछ हद तक, लेकिन अब जब उन पे कंट्रोल कर लिया तो KMNO4 का रास्ता निकाल लिया, KMNO4 से कोकेन सिंथेसाइज होने लगी। तो KMNO4 जो है, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दैट इज कंट्रोल्ड, ठीक है। उसके लिए हमने एक डिपार्टमेंट देखा था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, व्हिच इज हेडक्वार्टर्ड एट ग्वालियर। तो इसके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए वो नीड्स टू हैव अ प्रायर परमिशन विद द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, इट इज कॉल्ड NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, जो कि नार्कोटिक्स कमिश्नर ग्वालियर इश्यू करते हैं, ठीक है। और इट इज टेकन प्रायर टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। आपको अगर एक्सपोर्ट भी करना है या इंपोर्ट, कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट करनी है, तो पहले नार्कोटिक्स कमिश्नर ग्वालियर से वो नीड्स टू हैव NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद ही आप जो ये जो कंट्रोल सब्सटेंसेस है उनको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। और मैंने जो 5 सब्सटेंसेस का नाम बताया आपको, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसको आम भाषा में AA बोलते हैं, AA यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड, एफेड्रिन, सोडाएफेड्रिन, एंथेनिक एसिड एंड एन एसिटिल एंथेनिलिक एसिड, इनके लिए एनसीबी से यूआरएन लेना पड़ता है, ठीक है। एनसीबी जब यूआरएन इशू करेगी उसके बाद ही आप इनमें कोई ट्रांजैक्शन कर पाओगे। ट्रांजैक्शन क्या है वो हमें भी देख चुके हैं, सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, ठीक है। अब ये तो हो गया यूआरएन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमने ये भी बोल दिया कि अगर गुजरात या दमन एंड दीव में कोई कंपनी है, वो एनसीबी अहमदाबाद को एप्लीकेशन करेगी, एप्लीकेशन इन फॉर्म बी। आप आरसीएस ऑर्डर पढ़ोगे, उसमें जो फॉर्म बी में जो एप्लीकेशन है उसमें आप अप्लाई करोगे, तो फॉर्म ए में एनसीबी, मतलब फॉर्म ए जो प्रोफॉर्मा देता है, यूआरएन कैसे होगा, फॉर्म बी आपका एप्लीकेशन का प्रोफॉर्मा है, ठीक है। एक बात और आपको बताना रह गया शायद पिछले में, कोई कंपनी है, ठीक है, उसको अगर कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, इवन जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है दे आर नॉट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। हमने बात की थी नार्कोटिक ड्रग्स आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, बट साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, अब ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या बोला है, अफीम, कोकेन,
गांजा और इनके डिराइवेटिव्स, इनके अलावा जो भी सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट में है, बीट कीटामाइन, बीट एल्प्राजोलम, बीट नॉरएफिड्रिन, ये जितने भी हैं, ठीक है, दे आर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इन ड्रग्स, इनको हम बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग्स, किनको? अफीम, गांजा, चरस, अफीम, गांजा, कोकेन और इनसे निकलने वाले सारे पदार्थ, जैसे कि मैंने बताया था अफीम से लगभग 38 पदार्थ निकलते हैं, उसमें 26 का इंडस्ट्री और फार्मेसी में एक्सटेंसिव यूज है। ठीक है, इसी तरह गांजा का जो प्लांट होता है उससे बनता है हशीश, हशीश ऑयल, या आपका ये चरस, जल्दी चरस हशीश इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, थोड़ा सा टीएसए का फर्क होता है। इस तरह कोका प्लांट है, कोका प्लांट से कोकेन बनती है। इन ड्रग्स के अलावा बाकी जितने भी ड्रग्स एनडीपीएस एक्ट में, दे आर कॉल्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो अगर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस किसी फर्म को, ठीक है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है या उनको यूज करना है, तो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ग्वालियर, वही नार्कोटिक्स कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ती है। इसी तरह जो हमारे, मैंने जो 5 आपको सब्सटेंसेस बताए, इनके अलावा जो बाकी जो 6 नंबर से लेकर 20 नंबर, जो सीरियल नंबर 6 से 20 पे जो लिस्टेड है, उनके लिए उनका बस एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल्ड है, उनका डोमेस्टिक जो यूज है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस आर नॉट कंट्रोल्ड। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस आर कंट्रोल्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एफिड्रिन, सूडोएफिड्रिन, एंथ्रेनिक एसिड एंड एन एसिटिल एंथ्रेनिक एसिड। बस इनका डोमेस्टिक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो है ही है, डोमेस्टिक जो यूसेज है, डोमेस्टिक जो ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि मैन्युफैक्चर, पोजेशन, स्टोरेज, सेल, कंजम्पशन, ये भी एनसीबी के द्वारा कंट्रोल किया गया है। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो यू नीड टू हैव अ परमिशन फ्रॉम एनओसी, दैट इज नार्कोटिक्स कमिश्नर ग्वालियर, ही विल इशू अ एनओसी। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीजें देखी। इसके अलावा इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उसके द्वारा भी इन पे, एक्चुअली ये जो बेसिस है आरसीएस ऑर्डर बनने का, एनडीपीएस एक्ट बनने का, ये क्या है? जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस थे, जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र, जैसे हमने बोला था, हिंदी में कई लोग जानते होंगे, जिन्होंने आपने स्कूल डेज में आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में, क्लास 7 से क्या जाता है, दैट इज यूएन, जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस, वो एक इंटरनेशनली गवर्नमेंट बॉडीज है। इट हैज वेरियस फॉर्मेशंस अंडर इट्स हुड। डब्ल्यूएचओ है जैसे, देन अभी हमने बात की थी यूएनओडीसी है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड कंट्रोल। ठीक है, इस तरह से वेरियस फॉर्मेशंस है यूनाइटेड नेशंस के। तो यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशंस बनाए थे, कब बनाए थे? 1961 में। ठीक है, जो प्रिकर्सर्स की बात करते हैं तो 1988 में कन्वेंशंस बने थे इसमें, जिसके द्वारा कि प्रिकर्सर्स केमिकल्स को कंट्रोल किया गया है। तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे नहीं कि अपने मर्जी से कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं इन ड्रग्स या ये जो हम बात करें प्रिकर्सर केमिकल्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इट हैज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने बात की कि 5 केमिकल्स के बारे में बात की हमने, जिसके ऊपर की एनसीबी कंट्रोल करती है। उसके अलावा कुछ और है जिनके ऊपर की सीबीएन का कंट्रोल है, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सीबीएन कंट्रोल करती है। ठीक है, बाकी जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है वो सारा कंट्रोल सीबीएन का है, उसके ऊपर आपको सीबीएन में अप्लाई करना पड़ता है। अब हम देखते हैं प्रिकर्सर केमिकल्स कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 9A और जो सेक्शन 25A है, दैट डील्स विद प्रिकर्सर केमिकल्स। सेक्शन 9A क्या बोलता है? सेक्शन 9A सेज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू इंक्लूड एनी सब्सटेंस एज अ कंट्रोल सब्सटेंस। भारत सरकार, ठीक है, राज्य सरकार नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉर्मुलेट रूल्स, मतलब अगर मैं लेमैन की भाषा में बोलूं तो किसी भी सब्सटेंस को वो प्रिकर्सर केमिकल की श्रेणी में रख सकती है, ये समझते हुए कि इस केमिकल से ड्रग्स, हजार्डस ड्रग्स बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड की बात की, और रिसेंटली अब जैसे एमईके की बात करते हैं, मिथाइल इथाइल कीटोन। बेसिकली यू मस्ट बी नोइंग, अगर आप फार्मेसी के हो या केमिकल इंजीनियरिंग से हैं आप, क्योंकि यहाँ पे बी के भी स्टूडेंट्स हैं, तो जो केमिकल इंजीनियरिंग से हैं उनको शायद मालूम होगा कि एमईके इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ इंक्स, इंक बनती है उसमें, इंक बनाने में काम आता है एमईके। लेकिन अभी रिसेंटली जब देखा कि एमईके का तो डाइवर्शन हो रहा है ड्रग्स बनाने में, सो इन 2017 एमईके वाज इंक्लूडेड इन द प्रिकर्सर केमिकल्स लिस्ट। ठीक है, तो एनडीपीएस एक्ट में हमारे सेक्शन 9A 25 है, उसके अलावा आरसीएस ऑर्डर है, उसके अलावा कस्टम्स एक्ट है हमारे पास 1962 का, जो डील करता है, ठीक है, उसके साथ। एंड देन जो फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एक्ट है वहां भी इसका है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट। अब वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट ये बोलता है कि इंडस्ट्री, ये एक्ट नहीं है, मतलब ये इंडस्ट्री को कंपल्शन नहीं है, बट इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स। जैसे बहुत सिंपल है कि केवाईसी नॉर्म्स, जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, यू नीड टू हैव एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन। अगर आप किसी आदमी के साथ उसकी जो केवाईसी, जैसे जनरली उसके डॉक्यूमेंट्स आप ले, एंश्योर करें कि वो एक जेन्युइन एंटिटी है,
ऐसे नहीं, जैसे कई बार क्या होता है डमी एंटिटीज खड़ी कर दी जाती है, ठीक है। एक जैसे फर्म है कोई, मतलब अगर किसी को बदमाशी करनी है वो क्या करते हैं, डमी एंटिटीज खड़ी कर देते हैं और डमी एंटिटीज के नाम से ट्रेड होता है। तो बाद में अगर लॉ एनफोर्समेंट ऐसे ट्रेस करते पाएंगे भी, दे विल एंड अप ऑन ए डमी एंटिटी। सो as a responsible industry, as a responsible firm, as a responsible person carrying out trade of precursor chemicals, it is your duty, it is a when it is expected of the firm that they will ensure the genuineness of the parties with whom trade is being effected. I hope I am able to put my point across the table clearly. ठीक है, देन हम थोड़ा सा और एनडीपीएस एक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, हमने सेक्शन 9A के बारे में देखा है जिसके तहत गवर्नमेंट किसी भी सब्सटेंस को प्रिकर्सर केमिकल के श्रेणी में ला सकती है। देन सेकंड इज 25A, सेक्शन 25A आरसीएस ऑर्डर्स, ये जो आरसीएस कंट्रोल, ये जो आरसीएस ऑर्डर है अपना 2013 का, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस ऑर्डर है 2013 का, अगर इसके किसी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन होता है, अगर इसके किसी प्रावधान का मतलब आप कॉन्ट्रावीन करते हैं, यानी कि आप उसका उल्लंघन करते हैं, उसके लिए पनिशमेंट क्या है, 10 साल तक की जेल है, अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है एंड अप टू 1 लाख रुपीज फाइन है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस आरसीएस ऑर्डर अट्रैक्ट पेनलाइजेशन। क्या पेनलाइजेशन है, जेल ऑफ अप टू 10 years, इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 10 years एंड फाइन ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब और क्या चीजें हैं जो आपको करनी है, हमने जान लिया कि प्रिकर्सर केमिकल्स क्या है, कौन कौन से इंक्लूडेड है। ठीक है, दिस वी हैव सीन। देन हमने बताया था कि प्रिकर्सर केमिकल्स में जो 5 प्रिकर्सर केमिकल्स हैं, अच्छा आरसीएस ऑर्डर में शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी है। ठीक है, ठीक है, मैं देख लूंगा। तो शेड्यूल ए जो है ये वो है जिनका डोमेस्टिक कंट्रोल, डोमेस्टिक यूसेज कंट्रोल है। शेड्यूल बी में जो सब्सटेंसेस है जिनका इंपोर्ट कंट्रोल किया है किसने, सीबीएन के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स एक्सरसाइजेस कंट्रोल अपॉन देयर इंपोर्ट, एंड substances which are under schedule C, so control upon these substances is exercised by CBN। उनके जो एक्सपोर्ट पे सीबीएन कंट्रोल एक्सरसाइज करती है जो शेड्यूल सी में है। ठीक है, तो बेसिकली हमने बताया कि अगर यूआरएन, ये जो 5 सब्सटेंसेस उनमें कोई भी डील करनी है तो यूआरएन होना चाहिए। दूसरी बात है, जो भी फर्म, चलो आपको यूआरएन इशू कर दिया, अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है फॉर्म डी, जैसे इसके अंदर आरसीएस ऑर्डर के अंदर एक फॉर्म डी दिया गया है, फॉर्म डी के अंदर आप एक रजिस्टर ओपन करेंगे और इसको बोलते हैं कंजम्पशन रजिस्टर। ठीक है, फॉर्म डी के अंदर आप रजिस्टर ओपन करेंगे और उसमें एक एक एंट्री होगी। जैसे मान लो आज आपके पास 2 ग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड आया, मान लो आपने 1 किलो परचेज किया, ठीक है, 1 किलो आया, आप 1 किलो की एंट्री करेंगे 1 kg की। एक्चुअली क्या है, डी फैक्टो स्टैंडर्ड ऑफ प्रिकर्सर केमिकल्स इज इन किलोग्राम्स ओनली। आप बोले कि एसिटिक एनहाइड्राइड तो लिक्विड होता है, आप केजी, एक्चुअली डी फैक्टो स्टैंडर्ड ऑफ ऑल द प्रिकर्सर केमिकल्स इज इन किलोग्राम्स, इसलिए मैं केजी बोल रहा हूं। अब मान लो एसडी फाइन क्या है, एसडी फाइन में कंपनी है मुंबई जो सबसे ज्यादा एसिटिक एनहाइड्राइड सप्लाई करती है। सपोज कोई भी फॉर्म है उससे आपने एसिटिक एनहाइड्राइड खरीदा, आप सबसे पहले उसकी एंट्री करेंगे 1 kg एसिटिक एनहाइड्राइड आया इस डेट को और इस टाइम को। ठीक है, इस डेट पे आया, उसमें से आपने 100 ग्राम्स अपने क्यूए पर्पस के लिए लिया, भले 1 ग्राम ले आओ, 100 ग्राम ले आओ या 0.01 ग्राम ले आओ, दैट शुड हैव अ मेंशन इन द फॉर्म डी रजिस्टर। मतलब जो कंजम्पशन रजिस्टर है उसके अंदर इसका जिक्र होना चाहिए। जैसे ही आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपकी जो कंपनी होती है, कंपनी में कई सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपकी क्यूए किसी डिपार्टमेंट में उसकी डिमांड रेज की और जैसे स्टोरेज डिपार्टमेंट ने उसकी डिमांड के रिस्पॉन्स में यहां से नोट जो होता है आपका आर नोट जिसे बोलते हैं, रिक्वेजिशन नोट, वो इनिशिएट किया, उसी टाइम दैट शुड बी एंटर इन द फॉर्म डी रजिस्टर। इसमें लैप्स नहीं होना चाहिए कि चलो छोड़ो कल कर देंगे या शाम को कर देंगे, नो नो नो, नॉट लाइक दैट। उस बीच अगर कोई भी ऑथराइज्ड एजेंसी आ गई, ठीक है, एनसीबी, कस्टम्स या कोई भी एजेंसी ने आके उस टाइम अगर देख लिया नहीं मिला तो ये समझा जाएगा कि यू हैव कॉन्ट्रावीन्ड द प्रोविजंस ऑफ आरसीएस ऑर्डर 2030। सो मेक अ पॉइंट, इसको ध्यान रखना। ये तो आप आरसीएस ऑर्डर पढ़ेंगे, सब लिखा हुआ है मैं आपको, लेकिन बता रहा हूं जो प्रोमिनेंट उसके प्रोविजंस है। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड है दैट हैज टू बी प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, कम से कम 5 साल के लिए प्रिजर्व करना है। उसके आगे आपको प्रिजर्व करना है तो ठीक है, लेकिन कम से कम 5 साल के लिए ये जो रिकॉर्ड्स हैं उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, क्वार्टरली रिटर्न, जो भी कंपनी जिसको यूआरएन इशू कर दिया गया है, ठीक है, वो अगर मान लो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कोई भी क्यूए किसी कुछ भी कर रहे हैं, यू हैव टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न्स। किसको फाइल करनी है, एनसीबी को। जैसे अगर आप गुजरात में है या दमन एंड दीव में है तो यू हैव टू फाइल इट टू एनसीबी अहमदाबाद।
अब क्लियर? क्वार्टरली रिटर्न का जो प्रोफार्मा है वो आपके फॉर्म ई और फॉर्म एफ में है, ठीक है। अब फॉर्म ई जो होता है इसका, अगर आपके पास आरसीएस ऑर्डर है आपके पास, तो फॉर्म ई का प्रोफार्मा होता है, ये उनके लिए है वांटेड टू मैन्युफैक्चर, और फॉर्म एफ का उनके लिए है जो कंजम्पशन में है। जैसे कंजम्पशन यानी कोई कंपनी सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज करती है, जैसे कोई सीएफ एजेंट होते हैं, कैरियर फॉरवर्ड एजेंट, वो क्या करते हैं, सिर्फ खरीदते हैं और बेचते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट निकालते हैं, तो उनके लिए फॉर्म एफ है। जो कंपनीज हु आर इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिकर्सर केमिकल्स, उनको फॉर्म ई में होता है, ठीक है। अब फॉर्म एफ में एक और चीज है कि जैसे मान लो गुजरात की कंपनी किसी एमपी की कंपनी को भेज रही है, तो वो क्या करेगी, वो फॉर्म एफ में उसको बताएगी कि इस मैंने इस कंपनी को भी भेजा है मैंने, तो वो क्या करेगी, गुजरात में जो एनसीबी का हेड है, मतलब जो अहमदाबाद है, उसको भी इंटीमेट करेगी, वहां पे इंदौर में एमपी का हमारा जो ऑफिस एनसीबी का, दैट्स इन इंदौर, तो वो इंदौर को भी इंटीमेट करेंगे कि हमने आपके यहाँ इस कंपनी को भेजा है। हमारे यहाँ बताएंगे कि सर हमने इस कंपनी को जो एमपी है उसको भेजा है, इंदौर को बताएंगे कि हमने आपकी इस कंपनी को भेजा है। सो दैट थिंग इज दैट थिंग शुड बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट। कोई भी कंपनी काम कर रही है, दैट शुड नॉट बी हिडन बाय द लॉ एनफोर्समेंट, उद्देश्य ये है इसका, ठीक है। फिर जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मैंने बताया कि फॉर्म डी रजिस्टर होगा, उसमें क्लियरली मेंशन किया जाएगा, उसका फॉर्मेट दिया गया आरसीएस ऑर्डर में, इट शुड हैव अ क्लियर मेंशन एज टू व्हाई दैट सब्सटेंस वाज टेकन आउट, ठीक है। तीसरी बात, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस की। कोई भी कंट्रोल सब्सटेंस अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सपोज अहमदाबाद से मुंबई भेजना है, अब अहमदाबाद आ गया गुजरात में, मुंबई आ गया महाराष्ट्र में, इसका जोनल ऑफिस पड़ता है अहमदाबाद में। अच्छा, ये जो ऑफिसेस है उनकी जो लिस्ट है, ये भी आपको आरसीएस ऑर्डर में मिल जाएगी, ठीक है, किस ऑफिस के अंडर कौन सा जुरिसडिक्शन है, ये आरसीएस ऑर्डर के अंदर मेंशन्ड है इसको। तो अब मान लो गुजरात और दमन एंड दीव का जो जुरिसडिक्शन है, दैट इज इन अहमदाबाद। मुंबई का जो है वो मुंबई में, महाराष्ट्र में जो ऑफिस है, महाराष्ट्र एंड गोवा, उसका जो ऑफिस है वो मुंबई में है। तो कोई भी कंपनी जो मान लो अहमदाबाद से मुंबई अगर कोई कंट्रोल सब्सटेंस भेजती है, तो इट हैज टू टेक सम आई विल से इट हैज टू गो थ्रू सम, मैं प्रिकॉशन तो नहीं बोलूंगा, बट सर्टेन नॉर्म्स है जो उनको कैरी आउट करने। क्या है, पहली बात तो यह है कि इसके लिए एक फॉर्म जी होता है आरसीएस ऑर्डर में, देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर्म जी, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। इसके ट्रिप्लिकेट्स वो बनाएंगे और एक अपने पास रखेंगे और 2 कंटेनर के साथ भेज देंगे। कंटेनर जब वहां पहुंचेगा, सपोज अहमदाबाद से मुंबई गया, तो अहमदाबाद में जो फर्म है वो एक पे अपना एंडोर्समेंट करेगी, 2 को भेज देंगे कंटेनर के साथ। तो मान लो अगर बीच में किसी एनफोर्समेंट एजेंसी ने इंटरसेप्ट कर लिया उस कंटेनर को, सपोज ट्रक है, टैंकर है, टैंकर में एसिटिक एनहाइड्रेट जा रहा है, तो अगर बीच में मान लो रास्ते में सूरत में या वापी में कहीं पे भी किसी एनफोर्समेंट एजेंसी ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया, तो ड्राइवर को दिखाना पड़ेगा कि सर ये फॉर्म जी सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो कि मुझे फला फला कंपनी ने इशू किया है, मैं इस कंपनी को देने जा रहा हूं। और इसके जितने भी, जैसे अगर कंटेनर है मान लो, ठीक है, कंटेनर के अंदर मान लो टैंकर है, तो टैंकर के ऊपर बिल्कुल प्रोमिनेंटली लिखा होना चाहिए एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर मान लो ट्रक है, ट्रक के अंदर अगर बॉटल्स जा रही है एसिटिक एनहाइड्राइड की, तो एवरी बॉटल शुड हैव अ क्लियर मेंशन अपॉन इट एसिटिक एनहाइड्राइड। ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटे बारीक अक्षरों में लिख दिया, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। सो वेरी क्लियरली इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज इट शुड बी देयर एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और दूसरा, जो इनलेट्स और आउटलेट्स होते हैं उसके, दे शुड बी वेरी प्रॉपरली सील्ड, काफी प्रॉपरली उस पर सील की जानी चाहिए, कंपनी अपनी सील से उसको प्रॉपरली सील करेगी, इनलेट्स एंड आउटलेट्स, वाल्व्स को, जो इनलेट आउटलेट वाल्व बोलते हैं ना, जैसे बॉटल के हैं या इवन टैंकर के हैं, बहुत प्रॉपरली इनको वाल्व की जाना चाहिए। और जो वेट है वो सब आपके फॉर्म जी के अंदर आता है, कितना जा रहा है, कितना इशू किया था, कितना जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रिंजेंसीज नहीं है एक्चुअली, दीज हैव बीन कार्व्ड आउट सो दैट देयर इज फ्यू चांसेस ऑफ डाइवर्जन, कोई डाइवर्जन का चांस ना हो, इसलिए इतना ये जो स्ट्रिंजेंसीज है ये दी गई है। लेबलिंग ऑफ कंसाइनमेंट, हमने बात की कि लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, गाड़ी में लेबलिंग करते तो गाड़ी के ऊपर, अगर टैंकर है टैंकर के ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, जिस कंटेनर में है या जिस भी अगर बॉटल्स में है, दैट शुड बी वेरी प्रॉपरली एंड प्रोमिनेंटली लेबल्ड, ठीक है। प्रोमिनेंटली उसका नाम होना चाहिए, एड्रेस ऑफ एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, अगर जो भी भेज रहा है और जहां जा रहा है उसका नाम भी प्रॉपरली आना चाहिए उसके अंदर, फॉर्म जी में तो आएगा ही आएगा, उसके ऊपर भी आना चाहिए, ठीक है। देन अब एक बात करते हैं हम, अब अगर हमने बात की, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की। अब कई बार क्या होता है कि इनकी लाइफ होती है, दीज ऑल द केमिकल सब्सटेंसेस दे हैव सम लाइफ, ठीक है। इस तरह प्रिकर्सर केमिकल्स की उनकी भी लाइफ होती है। अगर मानो समझो उनकी लाइफ एक्सपायर हो गई
या किसी और कारण से अब किसी फर्म को उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, ठीक है, कि सर अब हमें या तो जरूरत नहीं है, या इसकी लाइफ जनरली लाइफ एक्सपायर्ड जो होते हैं प्रिकर्सर केमिकल्स, दे आर डिस्ट्रक्ट दे आर डिस्ट्रॉयड, उनका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। डिस्ट्रक्शन का अलग अलग का मैनर है, जैसे एसिडिक एंटाइड उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है, एफिड्रिन या सूडो एफिड्रिन है तो उनको इंसिनरेटर में बर्न कर दिया जाता है। तो इनका भी प्रॉपर ऐसे नहीं कि किसी फर्म ने अपनी मर्जी से कर लिया, उसके लिए क्या है, फर्स्ट दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम एनसीबी। परमिशन मतलब दे हैव टू फर्स्ट इंटीमेट, मतलब पहले वो प्रायर इंटीमेशन देंगे, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज फॉर्म आई। एक आरसीएस ऑर्डर में फॉर्म आई होता है व्हिच इज फॉर डिस्पोजल ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस। तो फॉर्म आई भर के आप जो भी अपने संबंधित आपका जो भी एनसीबी का लगता है जुरिसडिक्शन में जो भी ऑफिस है इसका, जैसे हम गुजरात में थे अहमदाबाद को, आप उसको अप्लाई करेंगे कि सर ये हमारे ड्रग एक्सपायर्ड है, एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं जो कि मतलब कंट्रोल सब्सटेंस है, और फॉर्म आई हम मतलब दे रहे भर के। फॉर्म आई भर दोगे तो सब कुछ अंडरस्टूड रहेगा। ये उसमें कॉलम रहता है रीजन का, क्यों आप इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो जैसे जो भी रीजन रहा आपका, यू हैव टू मेंशन दैट रीजन, एंड देयर आफ्टर एनसीबी का एक गेस्टेड ऑफिसर, कस्टम्स का एक गेस्टेड ऑफिसर और उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, इन सबके सामने उस ड्रग का डिस्पोजल होगा। मतलब अगर न्यूट्रिफिकेशन करना है तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, इंसिनरेटर में बर्न करना है तो बर्न होगा, बट इट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ अ गेस्टेड ऑफिसर ऑफ एनसीबी, सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज और कस्टम्स, और एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्म। इन तीनों के सामने कार्रवाई की जाएगी और देन एनसीबी सर्टिफिकेट इश्यू करेगी उस फर्म को कि हाँ हमारे सामने आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके पहले वो चाहे तो वे कर सकती है, वे करके देखेगी, सैंपल ड्रॉ करके देख सकती है कि वाकई में एफिडिन आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, पता चला कहा जा रहा है कि एफिडिन डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसके मामले में कुछ और ही भेज दिया और एफिडिन कहीं और डाइवर्ट कर दिया। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज मेड सम प्रोविजंस, दिस प्रोविजंस जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। सो अगर आप अब आई एम श्योर कि अब इसके बाद आप आरसीएस ऑर्डर पढ़ोगे सो थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है कि अब जैसे जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इश्यू किया है एनसीबी ने, अब मान लो कुछ टाइम के बाद कोई कंपनी सोचती है कि अब मैं डील नहीं करूंगी किसी भी कंट्रोल सब्सटेंसेस में, या मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो दे मे लाइक टू सरेंडर द यूआरएन। उसकी भी प्रोसेस है, जो यूआरएन है वो उनको एनसीबी को वापस एंटर कर देना है, और जो स्टॉक वर्क जो भी कुछ है, अगर कोई कंट्रोल सब्सटेंस का स्टॉक है तो पहले उसको डिस्ट्रॉय करके या जिस भी वे में आप डिस्पोज करें, बट विद अप्रूवल ऑफ एनसीबी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर डिस्पोजल ऑफ द स्टॉक, जो यूआरएन है दैट इज सरेंडर्ड टू एनसीबी। इस तरह से मैंने कुछ जो मेजर प्रोविजन है आपको लगभग लगभग हमने पूरा जो आरसीएस ऑर्डर है वो हमने कवर कर लिया है। सो वी हैव कवर्ड दैट, ठीक है। सो नाउ आई होप दैट थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। अगर नहीं भी क्लियर तो एक बार आप पढ़ लेंगे आरसीएस ऑर्डर, तो आई होप दैट इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। सो एटलीस्ट यू विल गेट अ हैंग ऑफ थिंग्स कि कैसी कैसी चीजें, मतलब क्या क्या एक्शंस थे जो आप अपने डिस्क्रिप्शन पे नहीं कर सकते। यू नीड, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच वन इज वेरी मेटिकुलसली रिक्वायर्ड टू फॉलो, ठीक है। और आरसीएस ऑर्डर में यू विल सी दैट देयर आर वेरियस फॉर्म्स, और इन सभी फॉर्म्स के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, इसका जिक्र हम कर चुके हैं। अच्छा, दूसरा अब एनडीपीएस एक्ट के बारे में जो आपके काम की चीज है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। हमने पहले भी इस चीज को टच किया था कि एनडीपीएस एक्ट, इट इज अ एक्ट वेयर पनिशमेंट इज लिंक्ड टू द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग कॉट, ठीक है। जैसे हेरोइन की हमने बात की थी, 250 ग्राम है तो 250 ग्राम में 10 साल से 20 साल की सजा होगी, कोर्ट उसे ऊपर की से भी सजा दे सकती है, ठीक है। इसी तरह अलग अलग ड्रग्स का, तो हम कुछ जो कॉमनली नोन ड्रग्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ओपियम है, देखिए अब इसमें एनडीपीएस एक्ट में एक टर्म है, ठीक है, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जब भी इसमें काम करती है तो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पनिशमेंट इसी के आधार पर दी जाती है। तो ये जो टर्म्स हैं इसको बोलते हैं कॉमर्शियल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी। अब ये चीज क्या है, ये अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग है, ठीक है। हमने हेरोइन के लिए बात की कि 250 ग्राम्स और मोर ऑफ हेरोइन इज कंसिडर्ड अ कॉमर्शियल क्वांटिटी। 5 ग्राम से लेकर 250 ग्राम्स किसकी, हेरोइन की, दैट इज कंसिडर्ड इंटरमीडिएट क्वांटिटी, और 5 ग्राम से अगर कम है दैट इज कंसिडर्ड एज स्मॉल क्वांटिटी। अब इसके हिसाब से पनिशमेंट है। हेरोइन की बात की जाए, 5 ग्राम से कम अगर किसी के पास हेरोइन पाई जाती है, या कोई आदमी 5 ग्राम से कम हेरोइन के ट्रांसपोर्ट में या इलिसिट ट्रेड में, हेरोइन तो क्योंकि इलिसिट सब्सटेंस है तो उसका किसी भी तरह से कोई भी एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज इलिसिट ओनली। सो एनी सब्सटेंस, एनी पर्सन फाउंड इन पोजेशन ऑफ लेस देन 5 ग्राम और लेस देन 5 ग्राम ऑफ हेरोइन, ठीक है, और इफ ही इज फाउंड टू बी involved in its illicit trade by any way whatsoever, he will be awarded punishment which may go up to 1 year and fine which may go up to 20,000 rupees. अब अगर 5 ग्राम से लेकर
250 ग्राम से कम तक, ठीक है 249.99 ग्राम्स या 249.9999 ग्राम्स, मतलब 250 ग्राम से कम हेरोइन की बात कर रहा हूं, उसमें पनिशमेंट विल बी अप टू 10 years एंड फाइन विल बी अप टू 1 लाख रुपीज। 250 ग्राम्स या 250 ग्राम से ऊपर हेरोइन हो गई तो जो पनिशमेंट है वो सीधे 10 साल और फाइन सीधा, मतलब 10 साल, कम से कम 10 साल, अधिकतम 20 साल, जो 20 साल के ऊपर भी हो सकती है। फाइन 1 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक जा सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कोकेन की, तो कोकेन में जो कमर्शियल क्वांटिटीज है, हेरोइन के केस में हमने देखा दैट इज 250 ग्राम्स, कोकेन के केस में और भी कम है, दैट इज ओनली 100 ग्राम्स, ठीक है 1 ग्राम, और उसकी जो स्मॉल क्वांटिटी दैट इज 1 ग्राम। 1 ग्राम से कम भी अगर किसके पाया गया कोकेन, वो कम से कम 1 साल के लिए जाएगा। 1 ग्राम या 1 ग्राम के ऊपर पाया गया, अप टू 10 years की सजा है, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहें, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले सेशन में। और दूसरा ये है कि ये एनडीपीएस एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है। तो आप इसी तरह से, जैसे अगर ओपीएम की बात करें तो कमर्शियल क्वांटिटी इज 2.5 किलोग्राम्स, गांजा कमर्शियल क्वांटिटी इज 20 kgs, हशीश और चरस कमर्शियल क्वांटिटी इज 1.5 kgs, मतलब ये क्वांटिटी है उसके ऊपर की मिलेगी तो सबसे स्ट्रिक्टेड पनिशमेंट है इसमें, ठीक है। इसके अलावा देयर इज वन मोर प्रोविजन ऑफ फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी फॉरफिट कर दी जाती है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब एक बात है, जो आरसीएस ऑर्डर्स में जो कंट्रोल सब्सटेंसेस है उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ये मतलब जैसे जो कमर्शियल क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी ये कोई प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। फॉर प्रिकर्सर केमिकल्स नो सच क्वांटिटी हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एनडी पकड़ा जाता है कमर्शियल क्वांटिटी के केस में, उसको बेल नहीं मिलती है, बिकॉज ये जो एक्ट है दैट इज नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल एक्ट है, ठीक है। तो कोई बेल का प्रावधान नहीं है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी में कोई भी ड्रग पकड़ेगी, अलग अलग ड्रग्स के अलग है, फेंटेनिल की बात की थी हमने, फेंटेनिल में कमर्शियल क्वांटिटी वाज 0.05 मिलीग्राम, ठीक है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ बेल, कोई बेल का प्रावधान नहीं है आपको, ठीक है। तो जिन अगर कोई स्टूडेंट लॉ से है तो आपको पता होगा कि सीआरपीसी में सेक्शन 37 होता है, ठीक है, मतलब सेक्शन 139 या 439 है आपका, जो कि कई बार लोग प्रायर बेल के लिए लेते हैं, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए लेते हैं। एनडीपीएस एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का अगर कमर्शियल क्वांटिटी है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इफ इट्स अ केस ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी, ठीक है। So it's a very stringent act, and we have discussed about various aspects of this act as well as RCS order. So now I hope the students have got a fairly good idea about this order as well as the act. अब अगर किसी को डाउट हो तो they may raise their apprehensions, the doubts. Am I audible? Anybody having any doubt? Just a minute, I am sharing my screen also now. किसी को कोई डाउट अभी तक? Now the screen is also visible to you. अभी हम Sir, you are audible as well visible. okay, thanks. So I will just Your slides are visible, sir. I will invite the audience for any apprehension at this stage. इस स्टेज पे किसी को कोई डाउट या कोई apprehension है क्या? तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर. No, nobody having any. We have on comment. There isn't any questions.
नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे मैंने आपको बताया था प्रिकर्सर केमिकल्स में आप देख रहे हैं ये टेबल है, आप देख रहे हैं जो 5 केमिकल्स हैं, जो 5 सब्सटेंसेस है, दे आर अंडर एनडीपीएस एक्ट, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी हैं दे आर अंडर, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल्ड है, ठीक है। आप देख रहे हैं शेड्यूल ए प्लस बी प्लस सी, हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब हम थोड़ा सा वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट देख लेंगे कि क्या वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट है, इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए जिससे कि वो हेल्प करे डाइवर्जन ना होने में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके अंदर आप जो ट्रांसपोर्टर्स, जिन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू आप प्रिकर्सर केमिकल्स का ट्रांसपोर्ट करेंगे, दे शुड बी ऑथोराइज्ड ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। जैसे कि उनके पास प्रॉपर बिलिटी और सब कुछ होना चाहिए, और प्रॉपर मतलब प्रॉपर अगर वो बिजनेस रन कर रहा है तो ही शुड हैव अ प्रॉपर ऑथराइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आप ये ड्राइवर्स को सेंसिटाइज कीजिएगा कि वो अपना टैंकर छोड़ के जाए ना, दे शुड नॉट लीव टैंकर अनअटेंडेड। पता चले कि वो बीच में छोड़ के चले गए, किसी ने निकाल लिया, जवाबदारी कंपनी पे आ गई, ये कहां गया, बिकॉज एट द एंड कंपनी हैज टू, जो कंपनी या जो भी है एंटिटी है, दे हैव टू अकाउंट फॉर एनी लॉस और एनी थेफ्ट या कुछ भी है उसमें, अगर मान लो शॉर्टेज पाई गई तो दे हैव टू अकाउंट फॉर दैट शॉर्टेज, ठीक है। हाँ, दूसरी एक बात, अगर मान लो कंट्रोल सब्सटेंस आपका एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है, इस बीच अगर कोई मान लो डैमेज हो गया, मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया या लीकेज हो गया उसका, तो उसे क्या करना है, सबसे पहले एफआईआर करनी है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। सबसे समीप जो पुलिस स्टेशन है, सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसको एफआईआर करनी है, ठीक है। फिर आपकी जो फर्म है वो फिर एनसीबी को इंटीमेट करेगी फिर बाद में कि भाई यहाँ पे हमारा पिल्फरेज हो गया था, या हमारा लीकेज हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, इतना हमारा जो एसिडिक एनहाइड्राइड है वो मतलब गिर गया हमारे, मतलब हमारे टैंकर से, या जो भी हो गया, उसके लिए उसके संबंध में एफआईआर करनी है और एनसीबी को इंटीमेट करना है, जो भी आपकी जुरिसडिक्शन की एनसीबी का ऑफिस है, ठीक है। देन जब आपके पास कोई टैंकर आता है तो सारी सील्स चेक कर लीजिएगा और वेट कर लीजिएगा, तो वेट उतना को उतना ही, ऐसे नहीं कि बस आपने वो जो आपके इनवॉइसेस है उसके ऊपर देख लिया, उसको लेके मत चलेगा, एक्चुअल वेट कीजिएगा उसका, ठीक है। और कहीं भी कोई शॉर्टेज मिलती है तो इन्फॉर्म एनसीबी एंड सप्लायर, सप्लायर को बताना है आपको कि भाई साहब आपने तो भेजा था 100 किलो, अभी हमें मिल रहा है सिर्फ 99 किलो, 1 किलो कहां चला गया। देन आपको साथ साथ एनसीबी को भी इंटीमेट करना है कि हमने ऑर्डर किया था 100 किलो, उन्होंने बताया भी था कि हम 100 किलो भेज रहे हैं, इसमें 100 किलो लिखा हुआ इनवॉइस में, बट आ रहा है केवल 99 किलो, 1 किलो एक गायब है। सो ये आपको सप्लायर को तो करना ही करना है, एनसीबी को भी इंटीमेट करना है साथ ही साथ, ठीक है। एंड अगर मान लो अनरीजनेबल शॉर्टेज है आपके पास, मतलब आपको लगता है कि अगर रास्ते में ड्राइवर ने जो मतलब कुछ अगर बदमाशी की कुछ है, तो आप इमीडिएटली एनसीबी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, एनसीबी को इमीडिएट कर दीजिए और ड्राइवर को रिलीज मत कीजिए। ड्राइवर को रिलीज मत कीजिए मतलब ड्राइवर को आप जो वो देते हैं, ठीक है, जो एक्नॉलेजमेंट देते हैं लास्ट में कि ठीक है, वो जब भी आपको लेके आएगा, वो मैंने बताया था 2 कॉपीज में लेके आएगा, एक कॉपी पे आप एंडोर्स करके वापस दोगे, वो उसको दीजिएगा मत। या ड्राइवर बिल्टी बिल्टी जो भी लाता है, डोंट एंडोर्स अपॉन इफ यू फील कि बीच में कोई गड़बड़ी हुई है, मतलब दैट इज अनरीजनेबल शॉर्टेज कोई है तो। Let NCB and the law enforcement agencies take their part in that. ठीक है। डिफरेंस इन प्योरिटी ऑफ मटेरियल, प्योरिटी में कोई डिफरेंस मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, या जो आपका है रिकॉर्डिंग रजिस्टर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और इसमें अनियमितता मिलती है, यू फाइंड एनी अदर शॉर्टकमिंग्स, दैट शुड बी रिपोर्टेड टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड टू एनसीबी एज वेल। चलिए, मैंने आपको ये बता दिया था, उसके अलावा चलिए, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, एनी apprehensions, we will address those apprehensions, otherwise we will terminate our session here. Sir, this is one question for you. Yeah, please. From wait a minute, sir. Yeah, please. Okay, no question at all, sir. Fine. Actually we were going, मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट गए थे because content बहुत सारा था and we were having shortage of time, so I was a bit fast. I understand that, but I am very much optimistic that after going through the RCS order, you will definitely get a good hang of it. अब अगर आप पढ़ोगे RCS order तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, और जो लोग खासकर फार्मेसी है या केमिकल इंजीनियरिंग के हैं, it is mandatory for them to go through the RCS order.
Any doubt? If at all any participant have a doubt, they can ask. You can post your question in chat box. Otherwise, feedback form and attendance link will be posted in your WhatsApp group, as well as here I'm going to soon post the link. Okay, thank you so much, sir, for an informative session, Amit Thank sir. you. Now Thank I you. will request a co-coordinator of the event, Mr. Harsh J. Trivedi, for giving vote of thanks. Please, sir, over to you. Thank you so much, Fatima. Myself, Harsh Trivedi. I'm the co-coordinator of this Gujkos and DST sponsored awareness in narcotic and psychotropic substances seminar. I'm taking a great privilege to take a vote of thanks ending the session. I won't take more time to taking a vote of thanks. I'm really thankful to the our principal in charge principal Dr. Kunal and Patel, who give a enormous support for organizing this kind of event. I'm also thankful to the sponsor Guch Coast and DST that they are sponsoring this event in a very short notice. Also, I'm thankful to our coordinator Swati Thare ma'am that she has organized a very wonderful event and taking me and Bhavna madam as a part of this event, and all the staff members who has worked for this event, and all the participants. Near about 770 registrations were there, and throughout the session, both sessions, there will be a 200 participants are joined live with us in YouTube. So I'm very much thankful. Finally, the event will be huge success. If the Amit Kumar Khare sir was not there, then this event won't be possible. So for taking that extensive sessions, more than 3 hours of sessions were there, and throughout they have to without wasting a single minute, they have given us a knowledge. This is a part of our syllabus. Still, we get enormous knowledge about this topic that we are not aware of that kind of things, which will be there in law act as well as the live whatever the examples have given for the juvenile court and cases, whatever the discussions were there. So it will be a privilege to get that kind of knowledge throughout the sessions. So I'm heartfully thankful to Amit Kumar Khare sir, and always it been a pleasure that also our chief guest there will be the whole first session that Selindra Kumar Sharma sir was there throughout the first session, and they have attended as a guest. They have joined with us throughout the first session. So I'm heartful thankful to the department NCB and Selindra Sharma sir as well as Amit Kumar sir. So thank you very much, and over to you, ma'am. Thank you so much, Harsh sir. On behalf of Sri Swaminarayan Sanskar Pharmacy College, I thank all the participants for attending today's seminar. So here we are ending this session, and within 3 to 5 days we are providing an e-certificate to all the participants. Sir, one of the question is there from Sanjay sir. Uh, Rules of import and export of psychotropic drug is applicable to all the types of medicinal system. I mean Ayurvedic too. Is it means this narcotic drug and psychotropic substance is in Ayurveda also? No, 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 not at all. No. Okay. These rules are exclusively in NDPS Act. Yeah, of course you are audible, sir. Okay, I'm audible. So these rules are exclusively in NDPS Act only. Even the NDPS Act and the Drug and Cosmetic Acts are disjoint. Fine. जो आपके सब्सटेंसेस शेड्यूल एक्ट में शेड्यूल एच में है, जैसे मान लो कि नार्कोटिक ड्रग अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आती है, तो दैट इज इन शेड्यूल एक्ट. ठीक है. So apart from these two acts, you don't have any other act where
these things are dealt with. Okay, sir. Thank you. One more question is there from Ayush Sajdev. What have to do to join NCB? Well, there are various, you can say, channels through which one can join NCB. One is clearing UPSC examination. So once you clear your UPSC examination, Union Public Service Commission examination, you may opt for NCB. There are various departments which you can opt for. So NCB is one of them. You can opt for NCB department. And actually, the thing is that NCB will definitely welcome students who have a pharmaceutical or chemical background. They are very much required in NCB. And as of now, we take their services as consultants. जब भी हमें कोई केस सॉल्व करना होता है तो हम बिल्कुल इवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का हम हेल्प लेते हैं. तो I hope in future also we'll take your help also in sorting out problems. Okay, thank you so much, sir. Thank you. No more question is there. Thanks for an informative session. Sir has left. Already left. Okay, I'm going to post an feedback form. Wait a minute. All the participants are requested to fill the feedback link, which will be right now putting into the comment section, and immediately you have to 15 to 20 minutes for fill up the feedback link. Whoever fill up the feedback link, they are only eligible to get the certificate, which will be available after 4 to 5 days. And also that feedback link will be available in WhatsApp group also. We will put it into the WhatsApp group, so you can go for fill up the directly from the WhatsApp groups. Whoever not joined the WhatsApp group, they can take that link from the comment section. Okay, so the link is already shown on the screen, as well as it will be available into the comment section. You can copy that and paste into your browser, and you can fill up the Google form.